कॉर्नर, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर में आज बदलाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं जावेद को वो कॉन्फिडेंस देने के लिए दुर्गेश को बड़े शुरुआती क्षणों से अटैक बेहद जरूरी करना होगा। Harshit, I don't have a problem with Durgesh Sahu on the right corner and also Javed, because Javed also can raid. That's a good combination. My problem comes in when where Hemant Kaivarth and Aniket Gawande, that difference in his dash moments. It's going to be Rohit Yadav who's going to take points. And left cover, Aniket Gawande should be really going in with the chain, with Hemant Kaivarth and going in for the dashes. I think my issue will be in the covers of the Chambal challenges. जी हाँ, कवर्स को वहां पर हेस्टी टैकल के लिए नहीं जाना है, बट क्या कवर्स की अगर हम बात करें तो आज आपको पेरियार पैंथर्स के मंजीत मित्रा और राहुल चौधरी नजर आने वाले। कवर्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा पेरियार से भी कई समय से नहीं नजर आया है, उसी की भी आइए बात कर लेते हैं और पूरन शेखावत साहब को बुला लेते हैं। Yeah, definitely. We will keep talking about it more and we will request Puran Shekhawat to please come up. Puran जी, पहले all the very best, अच्छा खेलिए। लेकिन हमें ये बताइए, कवर में आपका लगातार चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मंजीत मित्रा हमें लगा एक रेडर भी है, वो रेड भी कर सकता है और कवर में डिफेंड भी कर सकता है, लेकिन आपने जब चेतन चौधरी को अंदर लाया तो कहीं ना कहीं आपका कवर्स बहुत बदलाव देखे हैं। क्यों हो रहा है मतलब ऐसे? सर वो इस कारण कि हमारे मंजीत को थोड़ी इंजरी थी, अभी उसको लास्ट 5 मैच से हम रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि उसको इंजरी थी। अभी वो थोड़ा फिट है तो हमें अभी उसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम चेंज किया आज और वो अच्छा खेलेगा। हमें पूरा विश्वास है, 5 दिन रेस्ट से था, अच्छा खेलेगा वो। तो 5 दिनों के रेस्ट में आपने उसको बहुखूबी देखी कि क्या क्या कर रहा है। जब आप यहाँ मैच खेल रहे थे तो वो वहाँ होटल में कैसे रेस्ट कर रहा है, कैसे रिहैबिलिटेट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए, जब आपका जो वो कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, जैसे कि लोकेश गोसलिया हो या अनुज सैनी हो, अनुज सैनी ने वो वहां जाके जब वो सिक्सर मारा था हम्पी हीरोज के खिलाफ 6 बार, इनसे हमने वो नहीं पूछा ना, तो आपको क्या लग रहा था वहां बेंच पे बैठ के? सर अनुज को देखते हैं, वो एक ऑलराउंडर, अच्छा ऑलराउंडर है और उसको रेड कर रहा है, अच्छी रेड करता है, तो हमें पूरा विश्वास था कि यदि वो अकेला बचा, इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया कि मेरे को पूरा विश्वास है वो रेड में स्कोर लाएगा। वो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहा है हमारी टीम में। चलो वो भी मान रहा है कि ऑलराउंडर है, जब कोच भी बोल रहे कि ऑलराउंडर है तो हमें भी मानना पड़ेगा। अभी तो चक्का तो लगा दिया उसने, लेकिन आज अगर आप जीत जाएंगे तो सेमीफाइनल्स में जाना है, तो दुर्गेश के खिलाफ, संस्कार के खिलाफ क्या सोच है? सर लास्ट मैच इन्होंने खेला, इनकी टीम अच्छी है, चंबल चैलेंज अच्छी टीम है, पर उनमें एक ही रेडर है, जैसे दुर्गेश वन साइड स्कोर करता है। कल के मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उसकी। हमारी कोशिश यही रहेगी दुर्गेश को रोके, हमारा डिफेंस अच्छा है, हमारी कोशिश रहेगी हम दुर्गेश को रोके तो हम मैच जीतेंगे सर। सही है। और एक सवाल हर्षित पूछने से पहले, पलनी ने क्या किया? अगर आपने मैच ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, तो पलनी ने क्या किया, उनके थोड़े पतले डिफेंडर्स को हटा के उन्होंने थोड़े तगड़े डिफेंडर्स लगाए। राइट कॉर्नर में अरुल आ गया था और उधर लेफ्ट कॉर्नर में आपको विश्वंत दिखाई दे, तो वो इसलिए था कि इलवरसन जो कोच थे पलनी के, वो उन्होंने माना कि वो इसलिए था दुर्गेश के खिलाफ, और क्योंकि दुर्गेश थोड़ा लंबा है तो वो मतलब रेड मस्त अच्छा करता है, और संस्कार के खिलाफ। तो आज आपका कवर्स तो मतलब लोकेश का तो रहना ही है और अनुज का भी रहना है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि वो इतने तगड़े मतलब नहीं है तो डिफेंडर्स, तो उसमें क्या है हाल? सर उसमें ऐसा कुछ नहीं है सर, जो अच्छा है ना उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा जैसे डिफेंडर अच्छे हैं, हाइट वेट का कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा है उनको टेक्निक अच्छी है तो वो रोक सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा कोई भी हो, अच्छी टेक्निक है तो रोकेंगे जरूर सर। एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। और इससे पता लगता है कि जो टीम जीत कर आती है ना, उसका अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है नवीन। और चलिए मैं अंतिम प्रश्न पूछता हूं, मोनू प्रसाद लगातार पिछले कई मैचेस से आपकी टीम में खेल रहे हैं, बीच में एक हाई फाई भी बनाया, कल भी बहुत अच्छा खेले, तो आप उनका रोल कैसे देखते हैं सर? क्योंकि आज मिडल पर होंगे, कवर्स में जरूर मंजूत मित्र और राहुल चौधरी होंगे, तो क्या आज एक्स्ट्रा डिफेंडर के तौर पर आपने मोनू प्रसाद का इंक्लूजन किया है? सर जरूर, हमें मोनू को हम एक्स्ट्रा डिफेंडर, हम ये सोच रहे हैं कि हम 5 डिफेंडर के साथ मिलकर हमारा रेडर अच्छे स्कोर कर रहे हैं, और अनुज भी हमारे को पता है अनुज स्कोर कर लेगा, मंजीत भी रेड करता है, हमें 5 डिफेंडर मिल रहा है, हमारे को फायदा है इसका, प्लस पॉइंट है ये सर। आपके भरोसे के लिए आज हम देखेंगे कि अनुज पहला सुपर 10 कर पाते हैं क्या लग रहा है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, यदि अच्छा रेड स्कोर मिलेगा तो कोई जरूरत नहीं है, सुपर 10 भी करेगा, हाई फाई भी करेगा साथ में, ऐसा कुछ नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट पुरन जी, अच्छा खेलिए जी, अच्छी सोच नवीन, बहुत अच्छी सोच। और आज जो हमने चंबल चैलेंजर्स के Puran Shekhawat has seen the match of Palani Tuskers very clearly because Mukesh Kannan was there, he did not raid. Same role is going to be for Monu today. Same role. Mukesh Kannan just puts in a solitary raid and he is always there for the defense. And today Monu is going to do the same job. Yeah. But I loved what he said.
you know, if the skills are there, the body does not matter. Yeah. तकनीकी तौर पर अगर आप सक्षम हैं तो निश्चित तौर पर आपको किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। बट आइए हम सभी निर्भर हैं इस कबड्डी के मैट पर और इन सभी खिलाड़ियों पर बुलाएंगे बेहद जल्दी इन सभी खिलाड़ियों को। बट क्या कहा था इन सभी खिलाड़ियों ने, एक बार फिर से पूरी तरह से प्रॉमिस और वादा किया है आप सभी से कि सत्य निष्ठा के साथ इस कबड्डी के खेल को बहुत ही सेफ बनाए रखेंगे और क्लीन बनाए रखेंगे। हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की। We at Yuva Kabaddi series take a pledge to play safe and clean sport. Thank you so much for all the players to having that all-important pledge that we will keep it safe and clean as qualifier number 3. Chambal Challenges versus the Periyar Panthers. So both the coaches are confident of getting to the semi-finals after this victory. That is a very, very needed position for any team to be to get closer to Palani Tuskers in the finals. Right, Harshit, can we have both the teams on the mat, please? The countdown for finals had begun. एक कदम पर टीम अपने पिछले अपोनेंट को धाराशायी कर कर आ रही है और अपने आने वाले अपोनेंट को लड़खड़ाने पर कर देना चाहती है मजबूर। क्या ये गेम भी होगा इसी तरह से इफेक्शनेट और एफर्वेसेंट? सबसे पहले आ रही है टीम द कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सी all over from Chhattisgarh with more pace and more durability. Chambal Challengers! हुकार है, ललकार है, हम पूरी तरह तैयार हैं, यही कहना है राजस्थान के इन वासियों का, क्योंकि ये चाहेगी इस मुकाबले को जीतकर सीधा पहुंचा जाए सो कॉल्ड सेमीफाइनल में। आ रहे हैं ललक लिए। Welcome everybody watching on the fan code. This would be an interesting match to watch. This is qualifier number 3. Wherein Chambal Challengers will be locking horns with Periyar Panthers. Two most prominent side will be looking to win and grab that opportunity for the semi-final. And all the referees are ready for this big encounter today. Wherein Chambal Challengers starting 7 remains mostly the same with Sanskar Mishra, Ajay Maravi and Durgesh Kumar will be in the raiding trio. And in the covers we see Hemant and Aniket. In the corners, Durgesh Sahu and Javed Khan is the change that we have got in for Rehan Sheikh though. And Vanch, Rehan Sheikh, Akshay, Gopi Malapalli, Uday Kumar will be in the substitution lineup as per the situation arise. जी हाँ राधिका, अगर आपने बात की है शुरुआती सात के चंबल चैलेंजर्स की, तो आइए बात करते हैं पेरियार पैंथर्स की शुरुआती सात की। मोनू प्रसाद आपको वहां नजर आने वाले, राहुल चौधरी बीएन राइट कवर पर होंगे, लेफ्ट कवर पर मंजीत मित्र होंगे, रोहित यादव, गोपाल सिंह ये इकलौते प्रॉपर टू रेडर के तौर पर ये टीम के साथ शुरुआत करने वाले। अनुज सैनी, लोकेश गुसलिया, नकुल सैनी, रिचपाल जाट, सरदार चौधरी, मुकेश चौधरी और भगत सिंह यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स में होने वाले। राधिका, ये स्टेप आपको कैसा लगा राधिका कि 5 डिफेंडर्स के साथ आज खेला जाए, सिर्फ 2 रेडर्स के साथ आए? इसके बारे में हम जरूर थ्रू आउट द मैच बहुत सारी बातें करेंगे, बट अभी टॉप 3 रेडर्स की बात करते हैं तो 2 इसमें चंबल चैलेंजर्स के आपको नजर आते हैं। Absolutely, the top 3, second and third are from Chambal Challengers, who would be eyeing on their skills right now in this match. But then the chat is leaded still by Gagan Gowda. We had to good goodbye to him, but then he had made his mark in Yuva Kabaddi series with 261 rate points. But I'm sure with Durgesh Kumar, with this match, I'm sure he'll get close.
जी हाँ, ये मुकाबला अगर दुर्गेश कुमार निश्चित तौर पर और अपने आप को क्लोज लेकर जाएंगे तो आने वाला मैच में जरूर कोशिश करेंगे और बेहतर करने की। बताइए टॉप 3 डिफेंडर्स की बात करते हैं। लोकेश गोसलिया, राधिका एक तरफ वहां पर सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर है तो दूसरी तरफ सर्वश्रेष्ठ रीडर है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है। इन दोनों की भिड़ंत देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर हम टॉप 3 प्लेयर्स की बात करें ऑफ चैलेंजर राउंड तो तीसरे पायदान पर वहां पर लोकेश गोसलिया थे। अनडाउटेडली दुर्गेश कुमार पहले मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे, बट पेरियार पैंथर्स ने टॉस जीता। अच्छी शुरुआत है राधिका और शुरुआत के साथ साथ उन्होंने कोर्ट की भी मांग की, यानी कि इस मुकाबले की रेड की शुरुआत दुर्गेश कुमार कर सकते हैं। Absolutely, and this is the radar we will be eyeing on. In fact, the entire stadium would be eyeing on. Played 21 matches is Durgesh Kumar, 232 is his rate points, and consistency is his key. 75% is his rate strike rate. Lot relies on this raider Harshit today against Lokesh Gosalia. जी आज बहुत कुछ इस खिलाड़ी पर वहां पर प्रभावित करने वाला क्रम रहेगा। बट आइए रोहित यादव की बात करते हैं। ये प्लेयर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर ये पेरियार पैंथर्स के लिए कैसे भी अगर फ्लॉप कर देते हैं चंबल चैलेंजर्स इनको डिफेंस में तो थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। बट रोहित यादव, इनके पास हर एक वो स्किल मौजूद है। इनके पास प्रॉपर टो टचेस है, इनके पास जंप्स है, एक वो बहुत ही अच्छी तरह से स्किलफुल ये प्लेयर नजर आते हैं। चंबल चैलेंजर्स के अगर हम फॉर्म की बात करें राधिका, तो पिछले 5 मैच खेले, पिछला मैच पलनी टस्कर से हार कर आ रही है। उसके बावजूद यहाँ पर पिछले 5 मैच में 3 जीत है, 2 हार है। But then I think what matters is this day and today how they perform, Harshit. या सबसे इंपॉर्टेंट वही कार्य रहने वाला है। आइए आरुष सिंह ने एक प्रश्न पूछा है, शुड संस्कार मिश्रा लीड द साइड एज ही हैड परफॉर्म्ड वेल बीइंग द कैप्टन ऑफ द साइड। राधिका देखिए अभी तक अच्छा किया है और इसका एग्जांपल हम आपको जरूर ड्यूरिंग द मैच देंगे, बट आपसे मैं जवाब चाहूंगा कि आप क्या कहेंगे। I mean, he should play his own. He should not be relying on Durgesh Kumar's performance. He is better. पर कप्तानी को कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। दुर्गेश करे, संस्कार करे, कोई डिफेंडर करे, कप्तान के साथ साथ किस तरह से अपने आप को वहां देखेंगे ये इंपॉर्टेंट होगा। पर जहां पेरियार पैंथर्स ने अपने आप को देखा है, पिछला मैच रावली अरोज को हराकर आ रही हैं और कैन लोकेश गोसलिया अचीव 100 टैकल पॉइंट्स दिस एडिशन। राधिका फैजल करीम ने प्रश्न पूछा है, आपकी इंस्टिंक्ट क्या कह रही है, आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है। A bit difficult task because you'll have only, if you win this, you'll have a few more matches. But then, getting the 100 milestone is not important as much as he's consistent. जी हाँ, वो कंसिस्टेंसी की डिमांड चाहिए बस हमें। हालांकि पिछले 2 मैचेस का उनका जो एवरेज रहा है वो लगभग 7 टैकल पॉइंट प्रति मैच का रहा है। बट आइए बात करते हैं काउंटडाउन की और उसके बाद चलेंगे इस मैच की शुरुआत की तरफ। तो हुकार और ललकार जैसा हमने इस टीम अनाउंसमेंट के दौरान कहा था, ये मुकाबले की शुरुआत सागर पंचाल ने कहा कि जाइए दुर्गेश फतेह कीजिएगा, आज पूरा कीजिएगा प्रयास कि लोकेश गोसलिया के विरुद्ध आप अच्छा करें। और लोकेश को यही कहा गया है कि लोकेश आप अनडाउटेडली शुरुआत से ही प्रयास करना शुरू कर दीजिएगा। क्या राहुल चौधरी पीएन ने अटैक करने का प्रयास किया था राधिका, आज लोकेश और राइट कवर इनका अटैक अगर बेहतर चला, अनुज सैनी का अच्छा साथ आया तो क्या दुर्गेश को रोक पाएंगे। पर पहली एम्प्टी रेड के साथ दुर्गेश ने शुरुआत की राधिका आज के मैच में। Absolutely, it's a good way to start with an empty raid as well because he's just trying to see the depth of the defense, which is a good one. But then this is what a chance he has taken in. Area Panthers, number 12 out. अजय मारवी आज एज अ रेडर के तौर पर आपको खिलाया गया है। इस एंकल होल्ड का कोई वहां पर तुक बनता नहीं था, कोई समझ में परिपूर्णता थी नहीं। और अगर आप वो टैकल करने गए, ये राधिका बहुत अच्छा दृश्य है आज कि पहली रेड अगर दुर्गेश कुमार ने लगाई तो बराबरी के साथ संस्कार मिश्रा को दूसरी रेड लगाने का मौका मिला है। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्री शो देखा होगा राधिका, तो संस्कार को कहा है कोच ने कि आज कवर को अटैक कीजिएगा। इस बार कवर ने उन पर अटैक किया, संस्कार ने लॉबी का इस्तेमाल कर अपनी टीम के लिए पहला पॉइंट लाया। Absolutely, it's a first point for Sanskar Mishra. This should give him more confidence. As the coach has spoken about the skills of Sanskar Mishra, he should not play in the corner. Play from in position to the end position. Where the corners are strong, just take them off the equation and play. That is what is important for
Sanskar Mishra today. जी आप गोपाल सिंह, दोनों ही टीमों ने राइट रेडर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे हैं। गोपाल सिंह इस बार थे, राधिका इस बार हेमंत ने वहां पर गलती की है। और हेमंत का बात हमने प्री शो में भी कहा था कि ये राइट कवर थोड़ा सा वहां पर हमेशा कभी कभार गलतियां कर जाता है। बहुत अच्छी टर्न थी गोपाल की तरफ से। Absolutely, a good turn because the distance that the right cover would not cover. I think this is the raid that Durgesh Kumar need to make his mark against Lokesh Gosalia. Get the first step going. दुर्गेश थोड़ा सा हल्का सा वहां पर कहते हैं ना कि लड़क खड़ाना, उस तरह से प्रॉपर उनका कॉन्फिडेंस दुर्गेश कहला पाएंगे। ये मुझे लगा लोकेश गोसलिया के एक्सप्रेशन जो थी ना, इसके बाद उनके पास मौका था शायद इस बार। Lokesh stands in such a position, Harshit, that he's always on an attacking mode of a defender. So that does not give lot of wingspan for the raider to raid in his space where Lokesh Gosalia is standing. तो आज देखते हैं कि क्या ये रोहित एक मिशन पर जाएंगे। ये लीजिए, आज ये खिलाड़ी मिशन पर है स्कोर करने के। प्रदीप यादव साहब के चेहरे की एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बयां कर रही है। पेरियार पैंथर्स, रोहित यादव, कवर ने अटैक किया, कॉर्नर ने अटैक किया, शानदार जंप लगाई। दुर्गेश बहुत लेट हो गए थे आने में। Absolutely blindfolded that was from the corner defense. The timing was right, but then the speed of the defender was far more. I think the defense is doing far more errors here, Harshit. लीजिए लीजिए लीजिए, डिफेंस के फार बेटर होने की आपने बात की थी। लोकेश गोसलिया ने आपकी बात को सुना है और पूरी तरह से इसे मैट पर प्रभावित कर कर अर्पित किया है। डाइव लगाई, पूरी तरह से इंश्योर किया, अपना 110% दिया। कवर और कॉर्नर, जो हम अनुज सैनी और लोकेश गोसलिया के कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं राधिका, वो यहाँ हमें नजर आया। सिर्फ 2 खिलाड़ी चंबल चैलेंजर्स के, कल भी यही दृश्य थे पल्ली टस्कर्स के विरुद्ध, और आज भी चंबल चैलेंजर्स शुरुआती क्षणों में पिछड़ी है। Absolutely, and this young sensational raider Rohit Yadav has multiple skills in his armor, and he's very flexible and he's very smart for his raids and gets one more. Periyar Panthers, number 3 out. राधिका, चंबल चैलेंजर्स के डिफेंस ने अपना पुराने कई सारे मैचेस देखे नहीं है। यहाँ देखिए, यानी कि जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, और ऐसे में अमूमन डिफेंडर्स को कोच यही कहते हैं कि आपको एंकल्स पर जाना ज्यादा अच्छा होता है। आप डाइव लगाइए। अगर आप ऐसे फ्रंटल ब्लॉक करने जाएंगे तो शायद 70% चांसेस होते हैं कि रेडर बचकर आ जाएं। अब क्या संस्कार मिश्रा अपनी टीम को रिवाइवल दिला पाएंगे? 1 पॉइंट ऑलरेडी ले चुके हैं। इस बार फिर से जैसे अनुज सैनी आने लगे, लोकेश गोसलिया का एंकल आया। चंबल चैलेंजर्स 1+2 3 पॉइंट्स। पेरियार पैंथर्स ऑल आउट। चंबल चैलेंजर्स all in. What a time to come, Harshit. The very first all out comes within the 5 minutes of the match. That's because of the errors coming in from the defense of Chambal Challengers. जी, और राधिका, मुझे कुछ वक्तियों की याद आ गई। जैसे मैं चंबल चैलेंजर्स का ये प्रदर्शन देख रहा हूँ ना, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज लड़ना जरूरी है इस टीम को, और यहाँ पर फिर से हेमंत से वही मिस्टेक हुई जो लगातार ये मिस्टेक कर रहे थे। इस बार फिर से डबल थाइस पर गए, पर गोपाल ने जो इनके पास जरिया था उसका प्रॉपर उपयोग किया, जावेद को भी साथ में आउट किया। Absolutely. This shows that there is no coordination in the defense. They're just playing it individually, which should not be the game plan in the defense. Bonus, yes, it's for the taking for Durgesh, and it should be a multiple pointer. 1 point. सिर्फ अनुज वहां पर टच था, जरूर दुर्गेश ने अच्छी हल्की सी हाफ डुबकी लगाई। बट राधिका, मैं चाहता हूं दुर्गेश से कि वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, फ्रेंचाइजी लीग में खेल चुके हैं। प्रदीप नरवाल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ इन्होंने वहां पर बहुत समय बिताया है, और शायद प्रदीप नरवाल ही उनके रूम पार्टनर भी थे। तो राधिका, बाकी खिलाड़ी क्या करते हैं? आकाश शिंदे को हमने KMP YKS में देखा, उन्होंने अपनी टीम को एलिमिनेटर से फाइनल तक पहुंचाया। क्यों? सभी खिलाड़ियों के साथ प्रॉपर वार्तालाप करते थे। इस बार अनिकेत गायनेन थे और साथ ही साथ दुर्गेश साहू का कॉम्बिनेशन गया। अगर कॉम्बिनेशन जाएगा तो चंबल चैलेंजर्स को डिफेंस में अंक मिलेगा। Absolutely. This is the very first defensive point for Chambal Challengers. Yes, the cover, the position of the cover, that speed of the defender helped him, but then that was still a risky tackle, Harshit. There is no confidence in the defense still.
क्यों बार बार अटैक करना है राधिका? कवर्स लगातार अटैक कर रहा है, लगातार थोड़ा सा पिछड़ा है। अब 5 का हाउस है और यहाँ दुर्गेश रेड लगाने आए हैं। थोड़ा सा अगर बैक लोकेश गोसलिया को दिखाएंगे। देखिए राधिका, ऐसा नहीं कि लोकेश गोसलिया एरर प्रोन नहीं है, बट उनका कॉन्फिडेंस खुद पर बहुत बया करता है। बट दुर्गेश शायद हमें भी समझ नहीं आया कि कब राहुल चौधरी पर उन्होंने अटैक किया। राधिका, क्या टो टच था? Substitution. Yeah, it was a toe touch. Eight You know, in, that is what it is. The 3 tall out. raiders can use the maximum reach of their, long legs. This is what is a perfect example from Durgesh though. तो कल भी पलनी से जब पिछड़ा था, अच्छी वापसी की थी। अनिकेत को राधिका बड़ी जल्दी बाहर किया गया है। जरूर शायद थोड़ा सा हल्का सा शोल्डर में इंजरी वहां पर हुआ है। जरूर हमारे जेसिस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो हमारे फिजियो पार्टनर है वो गए हैं। गोपाल सिंह को अगर आप बाउंस करेंगे तो ये बचने की स्किल्स इनके पास बहुत अच्छी है। आप इन्हें अटैक मत कीजिए, गोपाल सिंह को अंदर आने दीजिए। और राधिका, जब जब गोपाल ज्यादा अंदर जाते हैं, इनकी रेड की सक्सेस परसेंटेज थोड़ी सी गिरती चली जाती है। Absolutely. Gopal Singh is one raider who relies more on the counter action skills. That means he waits for the defense to do errors and then he cashes on that. In that case, the Chambal Challengers defense had to play, with the mind. और पेरियार पैंथर्स अभी तक बिल्कुल वही कार्य कर रहा है जो इन्हें करना चाहिए। पर दुर्गेश, दिस इज हिज एक्सपीरियंस। बहुत समय तक लोकेश गोसलिया के आसपास अपना फुटवर्क दर्शाया। उसके बाद मंजीत मित्र राइट कॉर्नर को जाकर अच्छा स्ट्रेच करके डबल डोज देकर वहां पर हैंड टच किया। राधिका, Absolutely. The acceleration what this raider holds is far better than any other raiders we have seen in this summer edition. So that's where we get more points in a defense of 4. The speed you pick up the raider, the more possibility that he reaches the defense. तो आज देखने की क्या एक एब्सोल्यूट पॉइंट फेस्ट हमें नजर आ पाएगा। क्या अब चंबल चैलेंजर्स ऑल आउट दे सकता है पेरियार पैंथर्स को? पेरियार पैंथर्स वापसी भी करना जानता है, शुरुआत में लीड भी प्राप्त करना जानता है। बट राधिका, फिर से वही पॉइंट आ जाता है ना कि दुर्गेश लगातार रेड लगा रहे हैं। और कल चंबल चैलेंजर्स की एक और हार का कारण ये था कि पलनी टस्कर्स के पास शायद 4 सुपर टैकल थे। राधिका, यानी कि 8 पॉइंट उनके सुपर टैकल से आए थे। And also, if I'm not wrong, Lokesh Gosalia is one defender who has most super tackles to his name. But then he is being taken out of the equation. Good one. It's a consistent performance from Durgesh Kumar. This is what we want. Brilliant escape as well. जी राधिका, क्योंकि वो जानते थे कि लोकेश गोसलिया एक ऐसे डिफेंडर है जो मुझे एंकल्स के लिए जाएंगे और राइट कॉर्नर उसके बाद मुझे अटैक करेगा। यहाँ अच्छा मौका है चंबल चैलेंजर्स के पास ऑल आउट करने का पेरियार पैंथर्स को, बट यहाँ पीछे रहना पड़ेगा। खासकर हेमंत से कोई गलती की आवश्यकता नहीं रखनी है टीम को और पूरी तरह से इंतजार करना चाहेंगे। जावेद खान भी बिल्कुल पीछे की तरफ मौजूद है। दुर्गेश साहू अटैक कर सकते हैं, जी नहीं, ये बेहतर है जावेद खान। दोनों एंकल्स पर जाइए, ज्यादा अटैक मत कीजिए। और आज प्रदीप यादव साहब थोड़ा सा कैमरे से अपनी निगाहों को चुरा रहे हैं। राधिका, Absolutely, I think after the all-out, the defense hasn't done any errors so far, and Durgesh was on, 100% success rate. I think this was a good change, Rehan Sheikh being put out and Javed is being called in. I was for a moment when I saw the lineup, I thought, why this change in the last minutes of the tournament? But then that's a wise move. यहाँ पर रेहान शेख को जैसा कोच ने कहा, हमने लगातार बहुत सारा मौका दिया था। इस बार राहुल चौधरी को मौका मिला है मंजीत के साथ। सभी पूरी तरह से एक्सक्लेम्ड हैं कि क्या ये इतना बेहतरीन टैकल कैसे हुआ संस्कार जैसे टॉल और लीथल रेडर को। राधिका, Absolutely, he was just raiding blind, Harshit. Where was he caught? Just close to the midline. For his reach, the height he is, that's not the where the defenders will even challenge. Wow, just wow. 1 point. बाकी सभी खिलाड़ी एक तरफ राधिका और रोहित यादव एक तरफ। क्या शानदार, और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है खिलाड़ी। यहाँ देखिए, पहले डिफेंडर को लगाया कि वो बोनस के लिए जाएंगे, बट वैसे ही स्वीपिंग टो टच किया। ये रोहित यादव निश्चित तौर पर उन बड़े खिलाड़ियों के बढ़ने के तौर पर बढ़ रहा है, उस रास्ते पर बढ़ रहा है। बट संस्कार मिश्रा को जो टैकल हुआ राधिका, वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कवर्स ने एक तरफ अपर बॉडी को टारगेट किया और दूसरे डिफेंडर ने लोअर बॉडी को टारगेट किया। इसी के बीच में दुर्गेश को एक और पॉइंट। Absolutely, for the tall raiders, that should be the strategy. And yet again, this is a similar skill he uses for his reach. Goes for the toe touch. तो 16-13 राधिका। बट आज चंबल चैलेंजर्स को अगर मुकाबला जीतना है ना राधिका, आज पेरियार पैंथर्स की ये कमजोरी कहीं ना कहीं कि उनके पास सिर्फ
टू प्रॉपर रेडर्स हैं और बहुत ही हेवीली बिल्ड रेडर्स नहीं हैं। यानी कि रोहित यादव जो अपनी स्किल के लिए जाने जाते हैं, गोपाल सिंह जो अपनी काउंटर एक्शन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, और राधिका, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब सबमिट राउंड में यहाँ पर हाफ वन अनसक्सेसफुल रिव्यू दिया जाता है। पेरियार पैंथर्स शायद रिव्यू की डिमांड कर रहा है, उनके कोच ने आदेश दिया वो। टीवी अंपायर, पेरियार पैंथर challenge is bonus point. Our decision, no bonus. Please review. What's your call, Radhika? Yes, no. Here, when we look at this, when he was in the air, when the leading leg was in the air, it looked like he was almost crossing the bonus line. But when he landed the leading foot, it landed on the bonus line, Harshit. और इसलिए थोड़ा सा कड़ा दृश्य वहां पर हमारे टीवी रेफरी के लिए भी होगा। बट राधिका, मैंने वहां दुर्गेश कुमार को राइट कॉर्नर पर देखा, और राधिका क्या कभी आपने किसी मुकाबले में देखा है, क्योंकि आपने वहां पर बहुत सारे मुकाबलों में चाहे फ्रेंचाइजी लीग हो और बहुत सारे मैचेस में कमेंटेट किया है, डबल सुपर 10 प्लस हाई-फाई अगर कोई खिलाड़ी बनाता है, राधिका क्या कभी आपने ऐसा देखा है? Very, very rare. Maybe once in an occasion, but not like what we have seen in Yuva Kabaddi. Review. And that was a phenomenal. Bonus point. Pereira Panthers. यहाँ पे बोनस मिला है, यानी कि जो फर्स्ट इम्पैक्ट था वो बोनस लाइन के पश्चात जो था वो उतना बेहतर था कि बोनस यहाँ पर अवॉर्डेड दिया जाए। तो रिव्यू एक बहुत ही अच्छा लिया गया। 17-13 राधिका। धीरे धीरे पेरियार पैंथर्स हर रेड में पॉइंट ले रहा है। रोहित यादव ने बहुत ही क्लेवरली आइडलिक अंदाज में वहां पर बोनस चुराया। अब दुर्गेश फिर से क्या कवर पर अटैक करेंगे, पर बड़ा गैप है। और राधिका देखिए कैसे ट्रैप बनाया गया है। जो लेफ्ट कवर है और राइट इन पर रोहित यादव है, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। और अब शायद पेरियार पैंथर्स ये स्ट्रेटेजी बना रहा है राधिका कि हमें दुर्गेश कुमार को टच पॉइंट नहीं देना है, बोनस पॉइंट दे दीजिए। Absolutely. Durgesh Kumar is one raider. If he is given a chance, he will run away with multiple points. So now the equation for Pereira Panthers is they want to get one more all out of Chambal challengers and be in a comfortable spot. जावेद खान, जब रोहित यादव बढ़ रहे थे मिड लाइन की तरफ, वो रॉन्ग फ्रेम को चूज किया। बोनस भी है, जावेद खान भी है और एक और कवर के खिलाड़ी भी हैं। सागर पंचाल का कहना है कि ये सुपर डुपर रेड है। हेमंत और जावेद का कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, बट ये कॉम्बिनेशन प्लस कॉन्फिडेंस के साथ रोहित यादव की जय जयकार हो रही है। That bonus is definitely in question for me, but then these 2 pointers are good one. The cover defender who came in for the support, why was he not dashed? Yeah, bonus was not in question. And 2 out. और तुरंत पेरियार पैंथर शायद रिव्यू चाहता है राधिका। सागर पंचाल ने पहले बोनस दिया था, बट बाकी शायद वार्तालाप किया अपने साथियों से तो मना किया। यहाँ अमर वर्मा साहब इस मुकाबले के मैच रेफरी हैं, वो रिव्यू की मांग कराएंगे पेरियार पैंथर्स की तरफ से। Pereira Panther challenge is bonus plus 2 point. Our decision only 2 point. Please review. ओके, यहाँ देखते राधिका, जैसा आपने कहा ना कि पहली बात में कि वहाँ पर थोड़ा सा डाइसी था ये बोनस, और बिल्कुल देखिए ट्रेलिंग फुट पहले नीचे गिर गया, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे और बोनस अपना रिव्यू इस हाफ का गवा देगा पेरियार पैंथर्स। Absolutely. The leading foot should first cross the bonus line, then the trailing foot should land later. That should be the technique, but then I think here it is the reverse of the technique, so they will lose the review here. Unsuccessful. 2 point. Pereira Panthers. तो पेरियार पैंथर्स इस बार अपना रिव्यू जरूर गवाएगा। राधिका, एक खिलाड़ी वहां पर रिवाइवल मिल जाएगा। फिर से धीरे धीरे जो लीड है, जहां सिर्फ पहले 1 पॉइंट की हो गई थी, वहां अब पुणे 5 पॉइंट की बढ़ जाएगी। 7 मिनट 7 सेकंड का खेल शेष बचा है चंबल चैलेंजर्स के लिए। दुर्गेश कुमार एक और बार रेड लगाने आएंगे। और राधिका, क्या शानदार प्लानिंग हो सकती है ये किसी भी टीम की चंबल चैलेंजर्स के विरुद्ध, कि अगर दुर्गेश आए उन्हें सिर्फ बोनस लेके जाने दीजिए या फिर उन्हें कुछ ओवर ट्राई करने दीजिए, और ओवर ट्राई की कोशिश में उन्हें अक्सर आप शिकार बना सकते हैं। बट अनुज, ये अगर आप करेंगे तो दुर्गेश जैसा रेडर अपने डिसेप्टिव मूव्स के साथ हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर जाएगा। Absolutely, such slow footwork, I think it's the fault of Anuj that he just stood there without the anticipation from the raider. I think if you take out Durgesh Kumar of the equation of Chambal challengers, Pereira Panthers will make it big today, Harshit. Yeah.
पर पिछली बार मुझे नजर आया कि अनुज सैनी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गए थे, पहले उन्होंने सोच लिया था। यहाँ एम गोपी पीछे हैं दुर्गेश, और जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि हमेशा गोपाल सिंह काउंटर अटैक का एक मास्टर बन रहा है। एक बार फिर से एक राइट रेडर ने राइट टर्न किया, एंटी ब्लॉक किया। दुर्गेश साहू जैसे अनुभवी डिफेंडर से राधिका हम ये गलती की अपेक्षा नहीं रखते हैं। Absolutely, when you're playing in a defense of 5, that was not even needed to fall prey of a raider. राधिका, आपने संस्कार की बात की, क्या संस्कार का आपको फुल स्ट्रेच नजर आ रहा है? मुझे नहीं नजर आ रहा था, लोकेश को भी नहीं नजर आ रहा था। लोकेश ने देखा कि स्लो फुटवर्क है, और स्लो फुटवर्क के आगे लोकेश गुसलिया का एंकल होल्ड बड़ा प्रभावित रहता है। Absolutely, no, he just planted his right feet on the mat for a few seconds, Harshit. You know, that was the right time for Lokesh to pounce on. तो हमने चंबल चैलेंजर्स को ऑल आउट की तरफ धकेलने की बात की थी पेरियार पैंथर्स के लिए, क्योंकि पेरियार पैंथर्स का डिफेंस बड़ा ब्रिटल है, वहां पर बहुत ही हार्ड है, बहुत ही सख्त है। टूट जरूर सकता है बट बहुत ही सख्त वहां पर उनका डिफेंस रहता है। दुर्गेश कुमार राइट कॉर्नर पर होंगे, रोहित यादव के विरुद्ध उन्हें जाने दीजिए। अजय मारवी, आज आपको एज अ रेडर खिलाया गया है, आज आपको एज अ रेडर खिलाया गया है। रेडर के तौर पर आपने एक भी रेड नहीं लगाई है, डिफेंस में आपने 2 बार गलतियां की है। Absolutely, look at the positioning. And you are in a super tackle opportunity that is for your benefit. Maybe you have waited for the do or die of Periyar Panthers. अब देखते हैं चंबल चैलेंजर्स से 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे। लोकेश गुसलिया बहुत पीछे है डिफेंस, और दुर्गेश भी चाहेंगे कि चलिए सुपर टैकल का यह प्रयास करें। 9 पॉइंट्स राधिका आज फिर से ऑलरेडी वो प्राप्त कर चुके हैं। रोहित यादव किसकी तरफ जाएंगे देखना बेहद जरूरी होगा, क्या दुर्गेश की तरफ जाएंगे या फिर एम गोपी की तरफ जाएंगे। दुर्गेश जरूर एक ऑलराउंडर के तौर पर हम देखते हैं, और एम गोपी भी एक सो कॉल्ड ऑलराउंडर है, बट एम गोपी कभी कभार एरर प्रोन हो जाते हैं। But I think if that's the case, Rohit should target Durgesh Kumar. क्योंकि एम गोपी फ्रंटल ब्लॉक करने आएंगे और वहां पर वो बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। अच्छा बैलेंस कराया अपने आप को एम गोपी ने, और रोहित यादव ने भी सही किया राधिका, ज्यादा अंदर नहीं गए। दुर्गेश से कह रहे होंगे कि दुर्गेश आप आइए, आप रेडर हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, हम डिफेंस में आपको टच पॉइंट नहीं देंगे, अगर आप बोनस ले जा पाए ले जाइए। But then here the first do or die will come for Chambal Challengers. Yeah. So do not forget that. राधिका, चंबल चैलेंजर्स को बोनस मिल रहे हैं। चंबल चैलेंजर्स, Oh yeah, here. सब्स्टिट्यूशन, Exactly. चंबल चैलेंजर्स प्लीज कम। सब्स्टिट्यूशन 7 in, 5 out. राधिका, मैं समझ रहा था कि सुपर टैकल में दुर्गेश एक ज्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते थे। अनुज सैनी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में यहां पर गए हैं। पिछली बार इन्हें बड़ा पसंद है इस प्रकार की परिस्थितियों में जाकर पॉइंट लेना, पर क्या अनुज सैनी डिसेप्टिव मूव है, ये कहते हैं ना कि दोहरी तलवार पर यहां पर कार्य किया गया है। दुर्गेश शायद ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते थे, एम गोपी वहां पर है, रेहान शेख है, अटैक करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था राधिका रेहान शेख एक अच्छे ऑप्शन नहीं है। दुर्गेश को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है एंकल्स पर। 2+2 अनुज सैनी वन मोर टाइम एज एन ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए काम करते हुए। And the second all out for Periyar Panthers here. You know, I don't understand why Sanskar Mishra is not playing to his potential. You know, he being tackled out, he's putting more pressure on Durgesh Kumar, and the defense is everywhere of Chambal Challengers, Harshit. जी राधिका, चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस ऐसे खेल रहा है कि जैसे कि घड़े के है ना वो तेल की अगर हम बूंदे डालते हैं तो वो अंदर जाती नहीं, उसी प्रकार से आज वहां पर चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस खेल रहा है। सुपर 10 बना लिया है, 4 बोनस अंक है, 7 टच पॉइंट है, जो एक बार ऑल आउट जब इन्होंने किया था पेरियार पैंथर्स को तब इन्होंने वो अधिकतर टच पॉइंट प्राप्त किए थे। लोकेश गुसलिया, क्या बोनस मिला है इस बार दुर्गेश कुमार को? जी नहीं, इस बार बोनस नहीं मिला है। रिव्यू ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो मौका है राधिका, आपको पर हाफ 1 अनसक्सेसफुल रिव्यू दिया जाता है। I know, but you know, we have seen of Durgesh Kumar is, you know, for every raid he tries the bonus, but he'll only succeed maybe 5% of the time. You know, his leading foot is always, you know, ahead of the bonus line, but the rear foot is not in the air most of the time, Harshit. Periyar Panthers. जो हमने बात की आप रोहित यादव के लिए, और मुझे लगता है वो छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे वहां बैठे थे, वो शायद चंबल चैलेंजर्स के फैन थे राधिका। उन्होंने कहा कि नहीं ये जरूर सही नहीं जा रहा है चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में। दुर्गेश कुमार बहुत अच्छे हैं बट ये इकलौता चना भार नहीं ढो सकता है। संस्कार मिश्रा क्या रेड पर आ सकते थे। लोकेश गुसलिया की इस बार शानदार डाइव, दुर्गेश मिड लाइन के बहुत पास पहुंचे थे, बट इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। Periyar Panthers.
Yeah, that is also, kind of confidence in your partner. You know, that when you execute a tackle, there is somebody for the rescue. So that's what we have seen coming in from the right cover and also from, right corner. बट ग्रिप बहुत अच्छी थी लोकेश गुसलिया की। आज लोकेश गुसलिया जब 100% श्योर हो रहे हैं राधिका तभी जा रहे हैं। और क्यों पेरियार पैंथर्स जीत रही है राधिका, जरूरी टीम बराबर की है, बट मुझे लग रहा है कि आज मानसिकता जो है पेरियार पैंथर्स की बहुत स्ट्रांग है और चंबल चैलेंजर्स बहुत मेंटली डाउन खेल रहे हैं। Absolutely. No, I was watching the pre-show. I think Naveen said the body language of the players was slightly on a lower side. They did not look very confident or happy chaps on the court while they Let us enter. say Maybe 1 point. there's something Chambal happened Challengers. before this. Number 7 out. बट ऐसा क्यों राधिका? और ये सब ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? दुर्गेश कुमार की। वो अनुभवी खिलाड़ी हैं। हम आकाश शिंदे जैसे रेडर को देख चुके हैं केएमपी वाईकेएस में, जिन्होंने अपनी पूरी टीम को एक तरफा लीड करते हुए फाइनल तक पहुंचाया और फाइनल तक भी बहुत ही टफ फाइट थी अहमदनगर को। अहमदनगर वहां पर जरूर जीता, बट एक बहुत ही इज्जतदार वहां पर प्रदर्शन था और वो चंबल चैलेंजर्स के डिफेंस में नजर नहीं आ रहा है। इसलिए दुर्गेश कुमार जो अभी एक तरफ बैठे हैं, उन्हें अपनी पूरी टीम को कंट्रोल करना चाहिए कि कब आपको टैकल्स पर जाना है, कब आपको टैकल पर नहीं जाना है। जरूर उनकी ज्यादा एनर्जी वहां लगेगी, बट वहां पर चंबल चैलेंजर्स शायद मुझे लगता है थोड़ा बेहतर कर पाएगा राधिका। और 10 पॉइंट की लीड पेरियार पैंथर्स के पास है पहले हाफ की समाप्ति में। Absolutely, that's a big lead to count on with 18 to 28. 8 points, nothing to take, but defense is what Periyar Panthers have taken it. But 2 successful tackles is the problem. Number of unsuccessful tackles is the most problem for Chambal Challengers. जी हाँ, तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के पश्चात वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ, बने रहिए। तो आइए आप सभी का स्वागत करते हैं द क्वालिफायर नंबर 3। और जरूर चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस आपको इम्पॉसिबल नजर आया है। संस्कार मिश्रा ने शुरुआत ऐसी की थी, लग रहा था कि क्या संस्कार मिश्रा लगातार अच्छा कर पाएंगे, बट एक तो रेज में पकड़े जाते हैं और रेज कम लगाना लगातार। अब दूसरे हाफ में क्या ज्यादा रेज लगा पाएंगे? यहाँ रोहित यादव, दुर्गेश कुमार ओवर रन कर गए थे और बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पर रोहित यादव की स्किल्स बहुत ही आज एफर्वेसेंट रही है, बहुत ही इफेक्शनेट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। गोपाल सिंह को पॉइंट्स मिले हैं, दुर्गेश को सिर्फ बोनस अंक के साथ संतुष्ट होने दिया है। यहाँ पर पेरियार पैंथर्स ने पहले चंबल चैलेंजर्स ऑल आउट हुआ, उसके बाद जरूर चंबल चैलेंजर्स ने ऑल आउट दिया पेरियार पैंथर्स को, पर पुनः तीसरी बार यहाँ पर अगर कोई टीम ऑल आउट हुई थी तो वो चंबल चैलेंजर्स थी। बहुत ही बेहतरीन कार्य डिफेंस का। लोकेश गुसलिया 100% श्योरिटी के साथ यहाँ दुर्गेश के विरुद्ध जा रहे हैं। कुछ ऐसे डिफेंस चाहिए यहाँ पर। दुर्गेश साहू, जावेद खान, इन्हें स्टेप अप करना पड़ेगा और कवर्स को थोड़ा सा कम वहां पर एडवांस टैकल्स के लिए जाना होगा। Absolutely. I would prefer the covers need not perform here. Just stay on the court as 6th and 7th player and do nothing much. That is what should be the criteria for Chambal Challengers, because I think it's just not about Durgesh Kumar is the only performer in the squad of 7, Harshit. क्योंकि आप सिर्फ एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द नहीं खेलना चाहेंगे। राधिका, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मधु कवीरप्पा ने कहा था कि जरूर जब गगन गौड़ा नहीं थे टीम में, वहां पर हम्पी रोज लगातार जीती है मैचेस। मधु कवीरप्पा ने कहा था कि जब हमारे पास गगन गौड़ा होते हैं तो हमारी टीम सोचती है कि चलिए गगन गौड़ा किसी को भी रिवाइवल दिला देंगे, गगन गौड़ा सब संभाल लेंगे। और शायद चंबल चैलेंजर्स भी यही सोच रही है लगातार कि, बट यहाँ अच्छा कार्य किया क्योंकि अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आया। राइट कवर से अटैक करने गए, एक खिलाड़ी ने लोअर बॉडी को टेक केयर किया, इसी के चलते राधिका ये टैकल ज्यादा अच्छा वहां साबित हो पाया और अच्छी होल्ड भी बनी थी, अच्छा ग्रिप भी बना था और उसके पश्चात अच्छा साथ आया सभी डिफेंस से। गोपाल सिंह को शिकार बनाया, पहला पॉइंट चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में आया। Absolutely, first defensive point in the second half. I think they need to compensate a big time for the mistakes they have done. Now 14 failed tackles in 20 minutes is a big failure of the defense, Harshit. राधिका, आपके मुताबिक अब दुर्गेश की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि दुर्गेश को
पेरियार पैंथर्स में सिर्फ लोकेश गोसलिया ने अटैक किया है। एक बार अनुज सैनी ने अटैक किया था जब उनके ऊपर बहुत अच्छी जंप लगाकर वो चले गए थे। तो कैसे लोकेश गोसलिया के चंगुल से दुर्गेश बच सकते हैं? क्या राइट कॉर्नर राइट इन पर अब इन्हें जो टो टच लगातार वो करते हैं वो करना चाहिए वापस? I think, the running hand touches should be the key, Getting those points is more important than just 2 going in points. for the bonus points. Perrier Panthers, number 4 and 8 out. मुझे लग नहीं रहा है कि कभी भी रोहित यादव आए हों और सिर्फ 1 पॉइंट लेकर गए हों। यहाँ बहुत अच्छी किक, एम गोपी वहां पर डैश के लिए गए, कहाँ डैश लगाने गए थे? थाइस पर सिर्फ हल्की सी उनकी फिंगर टिप्स टच हुई। या तो इसका मतलब यह है कि एम गोपी बहुत धीमे आए, बहुत दूर से आए, या फिर रोहित यादव बहुत तेजी से निकल गए। Rohit Yadav should be credited here, Harshad, because he was running as a sprinter towards the midline. And if you cannot cash on these silly errors, you should. Sanskar Let us Mishra. say 1 point. या संस्कार मिश्रा, Chambal मंजीत मित्र challengers. इस बार Number सिंगल 4 थाई होल्ड out. के लिए गए थे। ओ, मंजीत और रोहित में थोड़ी सी यहाँ पर गुफ्तगू हुई है। शायद रोहित कह रहे थे कि नहीं ये टैकल हमें नहीं करना था, पर साथ नहीं आया। मंजीत ने जरूर एक तरीके से सोलो टैकल कर लिया था, पर अच्छी सोच भी थी कि वहां पर आपको मल्टीपल पॉइंट्स नहीं देने हैं। Oh, Rohit Yadav, if you look at him, it's already 14 raid points, Harshit. Every time is a multiple skilled raider with multi points and again a bonus. He's just looking for a nod from the team. राधिका, क्योंकि उन्हें राइट कॉर्नर डरा ही नहीं पाया है, दुर्गेश Bonus उन्हें डराए point, ही नहीं Perrier पाए हैं। Panthers. वो इतनी आसानी से बोनस चुराना है जैसा कि वो अकेले खिलाड़ी बचे हों और डिफेंस उन्हें बहुत आसानी से बोनस दे रहा हो कि जी आप बोनस ले जाइए, हम आपको टच पॉइंट नहीं देंगे। आपको एटलीस्ट उन्हें डराना पड़ेगा। अगर वो बेखौफ यूं ही खेलते चले गए तो वो यूं ही अच्छा कार्य करते चले जाएंगे। दुर्गेश थोड़े से भी खौफ में है क्योंकि लोकेश गोसलिया पे बहुत ज्यादा अटैक किया है। क्या राइट कवर की तरफ जाकर वो अटैक करने का प्रयास करेंगे? जी, इतनी वो थोड़ी सी ज्यादा अंदर जाने की कोशिश उन्होंने की नहीं है। क्या हुआ ये? क्या 30 सेकंड पूरे हो गए थे? And I'm sure there is a hooter in the stadium, Harshit. That's a countdown that happens. जी हाँ, I बिल्कुल think राधिका। Durgesh Kumar is one raider who would not do such a silly errors and missing the count of a raid. या तो शायद वो बोनस को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है और Bonus सागर point, बिल्कुल Chambal challengers. बोनस पॉइंट की शायद बात कर रहे थे। Wrong turn raid, 1 technical point. Favor of Perrier Panthers. क्या हम वापस सुन सकते हैं कि यहाँ पर सागर पंचाल ने क्या कहा? I'll tell you. He crossed the opposite court. He went into the Temple Challengers court and then again he got into the Perrier Panthers. That means, wrong turn. When it's not your turn, you have taken a raid type. क्या बात है राधिका, ये सागर पंचाल की आंखों ने बहुत ही अच्छा वहां निर्णय दिया। बट सागर के बारे में ज्यादा हम वार्तालाप करें इससे पहले रोहित यादव आए और एक और बार जो पार्टी है यहाँ पर जो शायद आज चंबल चैलेंजर्स की यहाँ चल रही है उसमें एक और बार जावेद खान को शरीक कराया। शानदार हैंड टच रोहित यादव का, चेकिंग ऑल द डिफेंडर्स, एक बार फिर से उनके लिए काम करते हुए बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, अनथिंकेबल और अनइमेजिनेबल बन रहे रोहित यादव। Absolutely, he plays as per the strength of his own, Harshit, rather than depending on the weakness of the opponent. That should be the strategy. And Lokesh Gosalia, was he sitting there? I think he's been caught there. Multiple points. 2 जी हाँ, points. 2 पॉइंट वहां पर मिले। चंबल क्या हम challengers, उस number रिप्ले 9 पर and वापस 6 जा out. सकते हैं जो दुर्गेश ने गलती की थी राधिका? और मैं अक्सर वहां पर रेफरीज के लिए डायलॉग वहां पर अर्पित करता हूं और सागर पंचाल ने फिर से बहुत ही शानदार कार्य किया। और सागर पंचाल वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने रेफरी थे जिन्होंने कहा कि वहां पर दुर्गेश ने अपना पहला पैर होम कोर्ट पे रखा, उसके बाद बावजूद उनका जो एक लेग था वो अपोजिट कोर्ट में था राधिका। तो ये रेफरीज का बहुत ही बेहतरीन निर्णय वहां पर और बहुत ही 16 कला संपूर्ण वहां पर सागर पंचाल और उनके पूरे रेफरी के ग्रुप का वहां निर्णय था। Absolutely, that's what we call the eagle eye of the referees. Yeah. And this edition, we have seen prompt decisions coming in, Harshit.
बहुत सारे निर्णय आए हैं और यहाँ पर भी शायद इस नन्हे उस्ताद ने कहा कि जी नहीं, कोई बोनस अंक वहाँ पर था नहीं। 14 अंक तो दुर्गेश भी प्राप्त कर चुके, बट दुर्गेश के 14 अंक और बाकी पूरी टीम के सिर्फ वहाँ पर 9 अंक हैं। दुर्गेश कितने अंक ला सकते हैं? अनुज सैनी वहाँ पर गए थे, पर दुर्गेश एंटी डिसेप्टिव मूव्स में बहुत अच्छे हैं, एंटी ब्लॉक किया अपने आप को। क्या राधिका चंबल चैलेंजर्स पेरियार पैंथर्स को एक ऑल आउट दे सकता है? Yeah, this is the window for them though. Anuj Saini, look at the power that Durgesh holds while using the lobby. And good thing is that, you know, none of the other defenders from Periyar Panthers came into support. And when Lokesh Gosalia is not in the team now, you know, when Anuj Saini is not in the team, this is the, you know, window for Chambal Challengers for a comeback. जी हाँ, ये परफेक्ट विंडो होने वाली है, बट रेडर्स को भी बाहर करना पड़ेगा क्योंकि गोपाल सिंह और रोहित यादव लगातार पॉइंट्स लाएंगे। ये उनकी कोशिश रहेगी, वो मोमेंटम को डाउन नहीं करने देना चाहेंगे। 9 अंकों की लीड है। अब दुर्गेश कुमार यहाँ पर फिर से जाएंगे, मोनू प्रसाद एक बार मौजूद मिलेंगे। सुपर टैकल्स में बहुत ही अच्छे हैं और राधिका पेरियार पैंथर्स ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सुपर टैकल्स अभी तक किए हैं, पर अभी जरूर 4 का हाउस है। और मोनू प्रसाद वहां पर राइट कॉर्नर पर किक लगाने का प्रयास। मनजीत मित्रा जानते थे दुर्गेश कुमार कि मनजीत वहां पर अटैक करने आएंगे, पूरी निगाहें उनके राइट कॉर्नर पर थी और दुर्गेश ने एक बार फिर से लॉबी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके पार किया अपने होम कोर्ट में। Absolutely. Though he was standing at the left corner, his eyes were looking at the far corner. So that is a good move from Durgesh though, and a do or die. Just to hold on, Chambal Challengers, for a comeback. This is the right opportunity and this is the raid. राधिका, मैं तो कहूंगा बोनस भी अगर देना पड़े ना तो यहाँ दे दीजिए आप, यहाँ पॉइंट मत दीजिएगा टच का, पर ये बात शायद चंबल चैलेंजर्स के खिलाड़ी वहां पर नहीं मान पाएंगे। 1 पॉइंट मिला है दुर्गेश साहू की तरफ से, ये चूक। डैश के लिए वहां पर जाना चाहते थे रोहित यादव, पहले जांच रहे थे मिड लाइन की तरफ। क्या राधिका बिना टच के जी नहीं, लॉबी में बाद में गए। But then the defender, the way he went into the raider, Harshit, his head was facing the mat. He was not even looking at the raider. Yeah. So true, राधिका। अगर आप की निगाहें नहीं है अगर आपने शिकार पर, तो आप वो कैसे अपना कार्य कर जाएंगे। यहाँ दुर्गेश, कितनी मेहनत लगती है रेड ला पॉइंट लाने में, वो निश्चित तौर पर हम जानते हैं। लोकेश गुस्से लेकर रिवाइवल आ चुका है, 4 के हाउस में मुश्किलात होगी। क्या डिसेप्टिव मूव्स दिखा पाएंगे दुर्गेश कुमार? राइट कॉर्नर पर अटैक करने का प्रयास, एम्प्टी रेड। Now it's the war between Durgesh and Lokesh Gosalia only, because I think that revival of Lokesh Gosalia is the key for Periyar Panthers come back again. द बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है राधिका। ये एक तरफ दुर्गेश कुमार हैं जिन्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब दुर्गेश कुमार खुद वहां पर राइट कॉर्नर पर खड़े हुए, क्या फिर से एक टच पॉइंट मिला है या फिर बोनस मिला है रोहित यादव को? राधिका, जब इतना अंदर आ रहा है रोहित यादव का खेमा, तो क्यों पूरा डिफेंस एक साथ होकर नहीं टूट पा रहा है? आसानी से एक और टच बोनस पॉइंट दे दिया, 10 पॉइंटों की लीड फिर से हो गई है पेरियार पैंथर्स के पास, और वो लीड को कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब संस्कार मिश्रा, ये सेकेंड रेड है, इसके बाद जो रेड होगी वो डू और डाई रेड होगी राधिका। Absolutely. In the halftime, we have seen 18-28. That was a 10-point difference, and they are still able to maintain this 10-point difference. That means the Periyar Panthers are playing a very, very calculative move here. Unless the Chambal Challengers take one more all-out on Periyar Panthers, it is a difficult task for Chambal Challengers, Harshit. या और राधिका, आज प्रॉपर होमवर्क पेरियार पैंथर्स कर कर आया है, और चंबल चैलेंजर्स वो होमवर्क की मुझे कमी नजर आ रही है कि वो शायद अपने पुरानी हार को भुला ही नहीं पाई थी। जो पलनी के विरुद्ध उनकी हार आई उसे भुला ही नहीं पाई, बट ये रेडर रिलेंटलेस है राधिका। जानते थे दुर्गेश कुमार वहां पर मौजूद है, एक शानदार किक दिखेगा राधिका। यहाँ फेक बोनस का अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बैक किक, स्वीपिंग टो टच, हर एक स्किल के मास्टरी के तौर पर रोहित यादव अपने आप को झोंक रहे हैं मैट पर। And again, you know, Durgesh Kumar. बस तो यार संस्कार कोई स्कोर नहीं देना, कुछ भी नहीं है संस्कार। सुने बेटा, ओए अनुज, ओए सुने, यो गोटा पकड़े यही कूद जाना, सपोर्ट देना बेटा। मुन्नू मुन्नू थोड़ा पास में दिखाना, ठीक है? राधिका, मुझे लग रहा how है much कि can Yes, how Radhika, much go on. can one player do, Harshit? You know, he was raiding and he was forced to take that position of the corner. अजय मारवी के डू और डाई रेड है, पहले एक बार ये काम कर चुके हैं, एक रेड पॉइंट अपनी टीम के लिए ला चुके हैं। बिल्कुल पीछे खड़े हैं मोनू प्रसाद। लोकेश गुस्सलिया
कहा था पूरी टीम ने कि जैसे ही लोकेश गुजरे वहां पर अटैक के लिए जाएं, सब आप सभी टूट कर आ जाइएगा। 11 अंकों की लीड हो चुकी है पेरियार पैंथर्स के पास। और राधिका, जो मैं बात कह रहा था ना कि चंबल चैलेंजर्स आज पेरियार से नहीं हार रहे, मुझे लग रहा है वो फिर से खुद से हार रही है, वो खुद की मानसिकता से। Exactly, they look underconfident just because in the first 5 minutes, the way the defense faltered big time. I think that's where the momentum broke. And also Periyar Panthers, the last 3 encounters against Chambal Challengers, they have won all the matches. So that gives them that mental ability and that confidence over this team. या वो कॉन्फिडेंस दे रहा है बिल्कुल। चंबल चैलेंजर्स जरूर पीछे है, बट पेरियार पैंथर्स बहुत ही आगे, बहुत ही बेहतरीन सशक्त खेल का वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस को कैरी फॉरवर्ड किया। चार्मिंग परफॉर्मेंस नजर आया है। आने वाले समय में आपको रावली एरोज खेलते हुए नजर आएंगे, एलिमिनेटर नीलगिरी नाइट्स के विरुद्ध राधेगा, वो भी बहुत ही इंटरटेनिंग मैच की उम्मीद करते हैं। बट 12 पॉइंट्स की लीड, क्या संस्कार मिश्रा कोई चमत्कार कर सकते हैं? क्या हैंड स्ट्रेच करके कवर पर अटैक करने जाएंगे, जो कोच ने उन्हें कहा है फुटवर्क के चलते स्टीडी फुटवर्क राधेगा। आज स्ट्रेच अपने आर्म्स को क्यों नहीं कर रहे हैं संस्कार मिश्रा? फिर से ऐसा लगा कि सिर्फ वहां पर डिफेंस में चले गए थे और डिफेंस ने कोई गलती नहीं की। संस्कार भी इंजर्ड हुए राधेगा, बिल्कुल अच्छे दृश्य नहीं है चंबल चैलेंजर्स के लिए। Exactly, no. I think the way all the 5 defenders went exactly to face him. Look at the layers of defense that came in. जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हमारे फिजियो पार्टनर वहां पर मैदान पर आए। हम बात कर रहे थे कि पेरियार पैंथर्स को ऑल आउट मिल पाएगा, यहाँ चंबल चैलेंजर्स अब ऑल आउट के करीब आ गई है। शायद थोड़ा सा शोल्डर में वहां पर निकल आया है गोपाल सिंह। ये मोमेंटम स्लो करना ही नहीं चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छी संकेत रहे हैं पेरियार पैंथर्स से कि आपको मोमेंटम स्लो डाउन नहीं करना है। और यहाँ देखते हैं गोपाल सिंह फिर से इधर से उधर, उधर से इधर तेजी के साथ भागे। जब नहीं मिला पॉइंट तो ज्यादा ओवर ट्राई नहीं किया, एम्प्टी हैंडेडली यहाँ पर वापस आए हैं। 8.5 मिनट का समय शेष राधेगा, 12 पॉइंट की लीड। And also Periyar Panthers have come back into the court after winning over Aravali Arrows. That is also a winning momentum on their side as well. So it's just the positive mindset playing against not so positive mindset of the Chambal Challengers here today. But राधिका, चंबल चैलेंजर्स क्वालिफायर 1 हार कर आया है, यानी उन्हें वो समझना होगा कि हम टॉप 2 टीम्स थे और उसके आसपास वहां पर हमें खेलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हारे हैं बट टॉप टीम से हारे हैं। यहाँ एम गोपी का अच्छा डबल टाई होल्ड नहीं है, सिंगल लेग पर टाइव लगाना था और यहाँ सुपर टैकल चंबल चैलेंजर्स को मिला है। क्या दुर्गेश का रिवाइवल आएगा? I don't think so because Durgesh was taking that corner position when there were 5 defenders. शायद दुर्गेश साहू का रिवाइवल आएगा राधिका। Exactly. तो चलिए 28-38 फिर से 10 पॉइंट की लीड पेरियार पैंथर्स के पास है। 7.5 मिनट का समय शेष बचा है इस मुकाबले में और जावेद खान जरूरी रेड लगाना भी जानते हैं, बट यहाँ मोनू प्रसाद राइट इन पर खड़े थे। हमने कोच से प्री शो में वहां पर पूछा था कि आज मोनू प्रसाद आप एक्स्ट्रा डिफेंडर के साथ जा रहे हैं, कहां आप उनका यूज देखते हैं? यहाँ आप उनका यूज देखते हैं। शानदार एंकल पर गए मोनू प्रसाद, पहले से नीचे बैठे हुए थे राधिका। Absolutely, very rarely we see these, support defenders who stand in the end position and do their job right, Harshit. तो चलते हैं स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की तरफ। युवा कबड्डी सीरीज का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। 5 लाख का कैश प्राइज और सभी मर्केंडाइजेस। मार दूंगा मैं, फालतू बात मत कर मेरे से, जो बोलो उतना ही सुन तू। यहाँ कोने में ट्राई करेगा बस, उसके बाद सपोर्ट करने के लिए आना है। ये सही है, कोने में अगर ट्राई करेंगे ना राधिका तो बार बिठा के फिर वो क्या रह गया फिर हो सकता है। वो केस तो बढ़िया थोड़ी ना है कोई, बस क्यों टेंशन ले रहे हो? खेलो बढ़िया, फ्री माइंड, नो टेंशन, ये आराम से कंट्रोल बस। पूरन शेखावत साहब ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, फ्री माइंड खेलो क्योंकि प्लेयर्स इस कैलिबर के हैं, इस काबिलियत के हैं। हम दोनों एक जरूरी है ग्राउंड में। हां 7 मिनट कंट्रोल बेटा, आराम से। थर्ड रेड में ट्राई, पहले ट्राई नहीं करनी। 11 की कोई दिक्कत नहीं। यादव और गोपाल सिंह राधिका बहुत ही आज प्रॉपर होमवर्क के साथ पेरियार पैंथर्स इसलिए भी आया है क्योंकि गोपाल सिंह और साथ ही साथ वहां पर रोहित यादव दोनों में से एक को कोर्ट पर रहना जरूरी है, ये कहा पूरन शेखावत साहब ने, क्योंकि जब वो दोनों एक साथ बाहर गए थे राधिका पिछली बार, तब टीम ऑल आउट हुई थी पेरियार पैंथर्स की। Exactly. And Gopal Singh. Now, I don't think, as per the coach, they wanted to play on a do or die. And that's the right strategy when you are leading with 11 points and just 6 minutes in the game. Just play with the do or die and just kill the time as much possible.
या क्योंकि अभी कोई रेडर भी नहीं है ना। देखिए अगर आप दुर्गेश, हेमंत और एम गोपी जरूर अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हैं, जरूर इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है राधिका। ये बड़े शुरुआती क्षणों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जब ये शायद 4 या 5 साल के थे, जब शायद इनके पिताजी की इस दुनिया में नहीं रहे थे, उसके बाद से उन्होंने बहुत अपने आप को संभाला है और युवा कबड्डी सीरीज ने वो अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पर आप आकर धीरे धीरे अपने कार्य को अच्छे कर पाएं। जी राधिका, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो शायद इन्होंने ग्रोसरी स्टोर पर यहाँ पर जॉब करना बड़े शुरुआती क्षणों में स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जब शायद 12, 15, 16 साल के हुआ करते थे, जब से उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया था एक किराने की दुकान पर। Absolutely, that only adds more respect to those players, Harshit, who just work hard their way here on this big stage. I really wish, he sticks on to the caliber he is and just polishes skills more. जी हाँ, यहाँ पर राधिका डू और डाई रेड है। एम कॉपी कहा था कोच साहब ने कि कॉर्नर पर अटैक करना है, क्यों फ्रंटल ब्लॉक ले गए। पिछली बार एक शानदार वहां पर सिंगल थाई होल्ड किया था आपने, इस बार एम गोपी अगर आप कोच की बात नहीं सुनेंगे, हेमंत से भी चूक यहाँ पर नजर आई और शायद यहाँ कह रहे थे कि कैसे करना था वो कार्य राधिका। Absolutely. At least he did not even go for the follow-through dash, Harshit. He was just looking for a block where there was enough space for the raider to escape. राधिका, और अब मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो वापसी गेट है ना वो क्लोज हो गए हैं और चंबल चैलेंजर्स जो है वो एलिमिनेटर आपको खेलती हुई नजर आने वाली है। टॉप 2 में समाप्त करने का ये जरूर आपके पास मौका होता है। अगर आप टॉप 2 में समाप्त करते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेजेस होते हैं कि आपको 2 अतिरिक्त मौके दिए जाते हैं कि आप वहां पर भी अगर हारते हैं तो भी आपको खेलने का मौका मिलेगा। पर पेरियार पैंथर्स राधिका, पिछले केएमपी वाइकेस अहमदनगर पेरियार पैंथर्स ने जीता था, क्या ये भी पेरियार पैंथर्स अब पलनी के लिए फाइनल में खेलने के लिए धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं? Yes, if they win today, and it would be, they would enter the semi-finals. So just 2 more steps forward for that trophy, though, for Periyar Panthers with this big margin. I think they will be high on confidence going into the semi-finals, Harshit. But now we want राधिका क्या कि चंबल चैलेंजर्स अगर एलिमिनेटर 3 में कैसे उतरेगा, क्या दुर्गेश कुमार फिर से अपनी टीम को जो है एक प्रॉपर तरीके से गाइड करें राधिका, क्योंकि मैंने हडल्स बनाते हुए दुर्गेश कुमार को नहीं देखा कि एक साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं, सभी खिलाड़ी को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गेश को ये समझना होगा कि एक अकेले प्लेयर से टीम नहीं जीत सकती है। जब तक मुझे 6 का साथ नहीं आएगा, जो गगन गौड़ा के लिए हुआ, यानी कि उन्हें डिफेंस से साथ नहीं आया, उनकी टीम समिट राउंड से पहले ही बाहर हो गई। अब दुर्गेश नहीं चाहेंगे कि वो उनकी टीम यही गलती करे और बाहर हो जाए टॉप 2 में समाप्त करने के बाद। Exactly, talk within the team, have that healthy atmosphere, try to point out where they're going right, where they are not going right. That's where is a scope of improvement in the game. If you just play on your own, if you just try and do the same mistakes over and over again, if you're not able to take the corrections, then this is what is the situation is of Chambal Challengers now. Time out. यार राधिका, चंबल चैलेंजर्स। चलिए पेरियार पैंथर्स की बात करते हैं। हमने इस पूरे मुकाबले में जो टीम पीछे रही है उसके बारे में बहुत ज्यादा वार्तालाप की। चंबल चैलेंजर्स क्यों इतना पीछे रही है, अपने आप। पर अब मैं बात करूं पेरियार पैंथर्स की राधिका, आज पूरन शेखावत साहब मेंटली प्रिपेयर्ड थे दुर्गेश और चंबल चैलेंजर्स के लिए। बुकी नहीं जानी चाहिए बेटा, सिंगल, ओनली सिंगल। Absolutely, just yesterday when Durgesh Kumar had done a phenomenal job as a raider and a defender, that gives him a lot of homework for Periyar Panthers to plan against this raider, and they have done their homework well and they have executed it well. या अब एज एन स्किपर दुर्गेश कुमार में भी वो शोल्डर्स थोड़े से डाउन नजर आ रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की उनकी सोच रही नहीं, क्योंकि जरूर पेरियार पैंथर्स से अब 2 और डायरेक्ट आने वाली है। बट डिफेंस में राधिका कितने पॉइंट है, शायद 4 टैकल पॉइंट्स या फिर 5 टैकल पॉइंट्स होंगे चंबल चैलेंजर्स के बाद, जिसमें शायद एक सुपर टैकल है। Exactly, that is what it is. Only 5 tackle points for Chambal Challengers. That's a big, that's a big question. अब मैं सिर्फ यही चाहता हूँ राधिका कि चंबल चैलेंजर्स जितना ट्राई कर सकती है, संस्कार जितना ट्राई कर सकते हैं, अजय मारवी जितना ट्राई कर सकते हैं, उतना ट्राई नहीं करना चाहिए। ये इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। जावेद खान देखिए, अगर आप प्रॉपर फ्रेम के साथ जाएंगे, अच्छी ग्रिप और टाइमिंग के साथ जाएंगे, तो आपको डिफेंस में पॉइंट्स मिलना लाजमी है।
How about them, Durgesh Kumar? Yeah, bonus is being given away. Bonus point, Chambal Challengers. बोनस पॉइंट्स। ये मुकाबला बिल्कुल उतना बेहतर नहीं गया है। दुर्गेश के भी नंबर्स आपको इंप्रेसिव दिख रहे हैं, बट वो परफॉर्मेंस आज उतने इंप्रेसिव नहीं तरह देगा। Exactly, you know, close to the two super 10, 19 or 8 points in total. But then, you know, they have to end up on the losing side. But then when they come back for the Eliminator 4, Harshit, the mindset has to be polished far better than what they are today. जी हाँ, बहुत ही फार बेटर करना पड़ेगा। पर रोहित यादव क्या खिलाड़ी है ये पूरी तरह से फ्लॉलेस खेलता है। और दुर्गेश राधिका कई बार यहाँ लोकेश गुसेला के नीचे से प्रयास कर चुके हैं। यहाँ रोहित यादव ने थोड़ा सा प्रयास किया है। आज उन्होंने पहली बार किया एंकल होल्ड का प्रयास। इससे पहले मैच में हमें इनसे बड़ी क्रम नजर आया था। बोनस प्लस 2 पॉइंट जरूर यहाँ सुपर हिट मिल जाएगी चंबल चैलेंजर्स को, दुर्गेश कुमार को। ये हमने बहुत बार देखा है, बट वो आज फिर से चंबल चैलेंजर्स जीत के पक्ष में नहीं जा पाएगी। ये सबसे बड़ा रिजल्ट रहा है। Absolutely, and why did Rohit Yadav went in for the ankle hold? That's the reason the cover was not even prepared for the rescue. 1 मिनट से कम का समय शेष है। रिचपाल को भी कहा है कोच ने, चाहिए अपने बाजुओं को थोड़ा सा खोल लीजिए, अपना फुटवर्क दिखा दीजिए डिफेंस को। डिफेंस चंबल चैलेंजर्स, अगर रिचपाल थोड़ा सा भी अंदर है अटैक कीजिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए अच्छा रहेगा। दादेगा एम गोपी को, अनिकेत को मुझे लगता है बहुत सारे मौके मिले हैं, पर वो उस तरह से अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं। दुर्गेश साहू बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। Periyar Panthers. But I think, you know, for Gopi Mailapalli, he was not stuck to one position. Harshit, that's the worry. Only single point जाना। सुन मुकेश, ट्राई अगर करेगा तो लगा देना, ठीक है ना? सिंगल निकल के मारना। सही करा ना, बोनस डाल के ले आते जल्दी। ट्राई करे तो सिंगल, ओनली सिंगल, एक ही जाना चाहिए बेटा। और राधिका, जो हम बात कर रहे थे ना, एम गोपी एक पोजीशन पर स्टिक नहीं कर पाए। आज सुबह मैं हमारे एलिवेट के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ संग्राम से बात कर रहा था, जो भी वहां पर एक बहुत ही अच्छे लेफ्ट कवर के डिफेंडर हैं। तो उन्होंने बताया था कि लेफ्ट कवर के लिए कैसी पोजीशन पर एम गोपिया वहां पर गलती कर रहे हैं। तो हम जो उस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे थे, यहाँ जरूर दुर्गेश कुमार ने अपने आप को एक्सेलरेट किया, राइट कॉर्नर पर जाकर अटैक किया। और ये देखिए संग्राम आपको तुरंत वहां पर नजर आए हैं स्क्रीन पर। और वो मेजेंटा जो कलर की जर्सी लग रही है राधिका, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी मेजेंटा वहां पर फ्लायर के साथ। बट दुर्गेश एक बार फिर से इनका परफॉर्मेंस राइजिंग एंड शाइनिंग हाई रहा है। Not too many changes happening in the Periyar Panthers, but then, you know, when you are leading with such big margin, just give some more time for the, you know, even the bench strength to execute the real match. देखिए, अगर चंबल चैलेंजर्स दूसरी हाफ में शुरुआत में एक्सेलरेट करना शुरू करता तो 37-44 कितना, अगर मैं पूरी तरह से मैच में सही हूं तो सिर्फ 7 अंकों की ये पेरियार पैंथर्स के लिए जीत है। कोई बहुत बड़ी जीत है नहीं, और ये 7 अंक कभी भी बराबर कर सकता था चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस। Just because, you know, we just got a super raid for Durgesh Kumar just before this raid. You know, before that, there was a huge difference as well. And there's a big victory for Periyar Panthers in the qualifier 3 today. Alluring performance, adorable performance। आज इस परफॉर्मेंस के लिए सलाम है पेरियार पैंथर्स के लिए पूरन शेखावत को, सलाम है लोकेश गुसेला की कप्तानी को। जो हम बात कर रहे थे कि हमेशा एक डिफेंडर का कप्तान होने का ये फायदा होता है राधिका, कि वो स्वयं भी संयमित रहते हैं और बाकी डिफेंडर्स को भी संयमित रहते हैं। और नवीन ने बहुत सही बात कही थी प्री शो में कि अगर डिफेंडर आपके लिए कप्तान होता है, वो पूरे डिफेंस को चलाता है। और वो मुझे लगता है राधिका, चंबल चैलेंजर्स एक अच्छे रेडर को मिस नहीं कर रही है, बल्कि एक अच्छे कप्तान को मिस कर रही है और डिफेंस को मिस कर रही है। Absolutely, you know, either a defender or a raider, Harshit, there should be somebody who should be constantly communicating within the team while they are still playing for those 40 minutes is the key. You know, we have seen Anup Kumar, who is a phenomenal captain, but he being a raider. Yeah. वो अनडाउटेडली राधिका बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वो लगातार अपने प्लेयर से बात करते थे। ऐसे नंबर्स ऑफ एडवांटेजेस वाले हम नाम ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें राकेश, जो कि खुद एक बहुत अच्छे कप्तान हैं और बहुत अच्छी तरह से इंडियन टीम को भी, फ्रेंचाइजी टीम को भी लीड किया है। और अच्छे कप्तानों की अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे तमाम रेडर्स मिल जाएंगे। बट पेरियार पैंथर्स के लिए ये वर्क कर रहा है उनका डिफेंसिव कप्तान, क्योंकि रेडर्स में रोहित यादव बेखौफ होकर रेड लगा रहे हैं और डिफेंस में लोकेश पूरी तरह से अपने डिफेंस को संभाल रहे हैं।
Absolutely, all credit. It's a team effort that had played well in favor of Periyar Panthers today and well deserved, Harshit. या आज पेरियार पैंथर्स ने बहुत अच्छा खेला, वेल डिजर्व्ड विनर्स हैं और लोकेश कुसलिया का आज फिर से हाई फाई आया है राधिका और उनके पास 2 मुकाबले और बचेंगे। जरूर हम देखेंगे उनके कितने टैकल पॉइंट्स हो चुके हैं। रेड पॉइंट चंबल चैलेंजर्स के पास एक ज्यादा है क्योंकि दुर्गेश कुमार ने आज भी 23 रेड पॉइंट्स प्राप्त किए, बट दुर्गेश आपके ये रेड पॉइंट ज्यादा याद नहीं किए जाएंगे। ये याद नहीं किया जाता कि अर्जुन राठी ने कितने रेड पॉइंट्स लिए थे। हम ये याद करते हैं कि कौन जीता था विंटर एडिशन हम्पी हीरोज जीता था जहां पर अंकित राणा बहुत अच्छा खेले थे। 25 रेड डाली, 23 रेड पॉइंट, सुपर रेड 1 थी, पांडवा की स्ट्राइक रेट थी। बहुत अच्छा है आपके लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स के लिए, बट जब तक आप अपनी पूरी टीम को एक ही धागे में नहीं पूरे देंगे तब तक वो आपके लिए एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट बन के नहीं आ पाएगा और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन के नहीं नजर आ पाएगा। Yes, this is the captain who was leading from the front, Lokesh Kosalia, with being the best defender of this edition and also for this match. 7 tackle attempts, 5 tackle points, 71% is a big strike rate against, 2 right raiders. जी हाँ बिल्कुल राधिका, बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रेट, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। और आने वाले समय की बात करते हैं एलिमिनेटर नंबर 2। एक टीम यहां से हमारा साथ छोड़ जाएगी, एक राजस्थानी टीम ने यहां पर डंका बजवाया है क्वालिफायर नंबर 3 में। क्या अरावली एरोज नीलगिरी नाइट्स को पटक नहीं दे पाएगी या फिर नीलगिरी नाइट्स के इरादे को झलक है? जैसा आपको इनके लोगों में नजर आ रहा है, इनके आंखों में भी एक जीत की वो धुन होने वाली है और उसी जीत की धुन पर वहां पर आगे बढ़ने वाले। बने रहिए हमारे साथ, ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का कॉन्टेस्ट यूं ही जारी रहेगा। क्वालिफायर नंबर 3 से हम इजाजत लेना चाहेंगे। राधिका, एक बार फिर से आपके साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करके बहुत मजा आया और बहुत सारी प्रोडक्टिव टॉक्स हमने हैशटैग आगे का रास्ता के लिए बात की है चंबल चैलेंजर्स के लिए।
क्या उच्च दर्जे का होमवर्क और मानसिकता के साथ उतरे थे आज पेरियार पैंथर्स जीत की भूमिका को अहम निभाने के लिए। आइए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिफायर नंबर 3 ऑफ युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023। इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हुए थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जिंजो होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्णा स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एंड इन द प्रेजेंटेशन टुडे वी हैव द टू कवर्स कॉम्बिनेशन, द राइट एंड द लेफ्ट कवर। Ravi Ranjan Kumar, Community Manager, Yuva Kabaddi Series, Sangram Authi, Operations Manager, Elevate India Sports। आप दोनों का हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे इस प्रेजेंटेशन में। आइए बात करते हैं चंबल चैलेंजर्स बनाम पेरियार पैंथर्स के इस अहम मुकाबले की, जहां पर इस मुकाबले को पेरियार पैंथर्स ने अपनी शानदार अंदाज में की गई शुरुआत के चलते आगे बढ़ाया और इस मुकाबले को बेहतरीन अंदाज में कार्यवत किया। वो थे कहीं ना कहीं उनकी टीम के कप्तान और उनके सभी खिलाड़ी। 45-37 इस मुकाबले को अपने नाम के और सीधा जगह बनाई है एलिमिनेटर नंबर 4 में, यानी कि वर्चुअल सेमीफाइनल में। सीधा चलेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ और शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे चंबल चैलेंजर्स के। कौन वो खिलाड़ी हो सकता है इनके नाम के अलावा? वन मोर टाइम, दुर्गेश कुमार 23 रेड पॉइंट्स टुडे और इनका फोटे बन चुका है डबल सुपर 10 बनाना। आइए देखते हैं इनके शानदार प्रदर्शन को। बट वी आर होपिंग कि जब कल ये मैदान पर उतरेंगे तो ये इनका डबल सुपर 10 उनके विनिंग कॉज में आए। बट आइए बात करेंगे बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच की। वो रहेंगे पेरियार पैंथर्स के, जिन्होंने सिर्फ हाई फाई नहीं बनाए बल्कि ये 5 पॉइंट लगभग 10 पॉइंट के बराबर थे। और वो और कर नहीं है बल्कि द वेरी लीथल, द वेरी स्पेशियस लेफ्ट कॉर्नर लोकेश गुसलिया ही इज। और अब समय है कबड्डी कमाल ऑफ द मैच की बात करने का। तो पेरियार पैंथर्स में मौजूद है एक हीरा जो तराशा गया है पूरी टीम की तरफ से, और अब वो हीरा पूरी तरह से अपनी चमक बिखेर रहा है इस समिट राउंड में। वो और कोई नहीं है, 19 रेड पॉइंट्स के साथ और एक शानदार सुपर रेड के साथ इस कार्य को किया है रोहित यादव ने। आइए देखेगा इनका दिल जीत लेने वाला खेल। So that's all from the post-match presentation of qualifier number 3. Thank you so much, Ravi Ranjan and Sangram Authi, for joining us. Thank you so much, all of you, for joining us.
how to unfold, and that is how the Palani Tuskers are still waiting to see who extra aggression. अब सच बताइए राजेश जी, वो चाहिए क्या कबड्डी में हमें? जी कबड्डी गेम ही एग्रेशन का है, तो अच्छा। एग्रेशन तो जरूरी है। अच्छा है तो अग्रेशन दिखेगा, लेकिन लिमिट में रहेगा, आप वो जी, बोल रहे जी, हैं लिमिट, कबड्डी लिमिट। के स्पिरिट में होगा। जी सही है, सही, ऑल द वेरी बेस्ट। और नीलगिरी नाइट्स के खिलाफ बहुत अच्छी खेलते हुए आई है टीम, और आपने जरूर उनके पिछले मैचेस को भी देखा होगा, और उनके खिलाफ खासकर उनके रेडर्सों के खिलाफ, तो क्योंकि आज सुंदर विश्वकर्णन अगर उतरेंगे या मारीमुत्तु सेल्वम उतरेंगे तो उनके खिलाफ बहुत टफ होने वाला है थोड़ा आपका डिफेंस, तो उसका तैयारी कैसी है? मैच में देखिएगा आप। अरे नहीं, ये मैं जवाब मानूंगा नहीं, किसी और माने या माने मैं तो जरूर मानूंगा नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। जैसा कि पहले खेलते हुए हैं उससे आज अच्छा ही खेलेंगे, अच्छा ही करके दिखाएंगे। ये चाहिए जी। ये जवाब चाहिए मेरे से। मैच में तो सब देखते जी, हैं, बिल्कुल। कोच के मुंह से सुनना वो होती है ना, जैसे हीरे पटकते हो नीचे। थैंक यू राजेश, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, डू वेल। आई विल नेवर अग्री टू मैच में देखेंगे, मैट पे देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे, लेकिन क्या है मन में, कोच के दिमाग में क्या है वो जानना चाहते हैं। और ऐसे ही चलिए बुला लेंगे नीलगिरी नाइट्स के कोच को भी, राजा राम वांगा। राजा राम, you know this is going to be a lovely match for Raja Ram also. Raja Ram, கேட்டிங்க போல நினைக்கிறேன், நீங்க வந்து ராஜேஷ் என்ன பேசினாப்ல அப்படின்ட்டு தயாரா இருக்காரா, டிஃபென்ஸ் வச்சு தயாரா இருக்காங்க. நீங்க சொல்லுங்க, ரேடர்ஸ் எந்த மனநிலையில இருக்காங்க, சுந்தர விஸ்வகண்ணன் எப்படி இருக்காரு இன்னைக்கு, நேத்து அருமையான வெற்றிக்கு அப்புறம்? நிச்சயமா சொல்லியிருக்காரு சார். சார் கண்டிப்பா நம்ம வின் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சார். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்மால் சேஞ்சஸ் மட்டும் சார். அதாவது வசந்த் இன்னைக்கு மெயின் சவுண்ட் விளையாடல, அது போல ஹரிஸ் விளையாடுறாரு. Nandri. Right, so as the coach has promised me, I'm now going to call Velavan as Pallavan. Let's see what's going to happen as we will head down to Harshit to call in both the teams on the mat for this all-important eliminator. History tells us the powerful people come from the powerful places, but YKS proving this wrong and teaching us the powerful people make the places powerful, and the double dose of power for Aravali Arrows. With the substantial performance in the last match, can they beat Arrows in a tandem? Give it up for Nilgiri Knights! So we heard what the coaches actually had there in their mind, and I am that first person that who will not agree when a coach says no, mat pe dekh rakhenge. No, I will not never ever agree with any coach with that answer, and that's what Rajesh also was ready. Yeah, he said everything that was much needed, because it's not easy when you lose out Rajendra Bakar, when you lose out Prem Badu like defenders. It's not easy to manage a team across, but Rajesh Gurjar, yeah, he's managed to put across Hariom Chaudhary on that left corner and Ankit Jad on that right, and then number 6 comes in, and then Rohit Beniwal and also Sahil Bhangra. Rohit Beniwal and Sahil Bhangra, the both raiding barrels, I should call them. That's really good. And Aftab Khan, that's a nice inclusion as well. And Chetan Chaudhary being the captain, and Pradeep Singh, Rohit Pancholi, Sonu and Dev Gurjar and Navpreet Singh will be in the substitution lines. And along with me is Ryan James. Good evening, Ryan.
I think Ryan will join us very, very soon as Velavan Muruganandan. Yes, as Rajaram said, you will be asking to say is Velavan than Pallavan. Yes, Santosh Srinivasan on that right corner. K. Harish will be the captain because today you know that Vasant is not around. So, of course, Sundar Vishwakandan and Marimuthu Selvam will be the raiding trio. And then the Manigandan combination of Suralamani and Nesamani in that covers, as well as Kesavan Raja, Ilumali Murthy, A. Sabi Kumar, Vasant Murugan and George Vivin will be in the substitution lines. Very interesting to see this top three raiders as well as Gagan Glorious Gowda. Yeah, I was the first one to ask to name him Glorious, but and I was the first one to just exhibit some displeasure when his team, he did not go ahead and get those raid points for the team scores. Nevertheless, as Durgesh Kumar today once again had a tough match, another loss, and Sanskar Mishra also another loss. They will be waiting for the winners of this match. On 93 for Lokesh Kosalia. Right. I was expecting that he'll be the first defender to go out there and reach 100 tackle points. Is almost there. And Ankit Jat, yeah, very good out there. And then Rajendra Baka, we will miss you in this summer edition. Right, wonderful work. As this is what it's the lineup. And the toss was, of course, flipped over by Akshay Desai. And Chetan Chaudhary says, I have got the toss, give me the coin. And Harish out there will be asking his raiders to raid first. Right, to watch out for Sahil Bhangra. This is a very, very good inclusion as Ryan joins me and includes himself in the commentary box. Hi, Ryan. Right, as Sahil Bhangra will be really effective in that raiding department. K. Harish is suddenly come in. He's out with an injury. He's got a little bit of a ligament issue as well. And then today, in an all-important game, they don't have the services of Vasant Murugan. I asked about Rajaram, the same thing. He's really unwell. I saw him apply a lot of creams that will help you relieve your cold and headache. That's what as Vasant Murugan was applying on his nose. But yeah, this is a good lineup here for the Aravali Arrows. Is Chetan Chaudhary feeling the captaincy pressure as he hasn't performed well in this edition? Yeah, good question there, Rahul Sinha. That was the exact question that I asked to Rajesh Gurjar. Yeah, I was not so blunt, but yeah, you have the rights to be blunt as well, Rahul. Yeah, I asked him very clearly, when Prem Badu went out, how did you manage the captaincy? And Rajesh Gurjar said, Chetan Chaudhary theek hai, kar lega, mujhe bharosa hai and all that. But yeah, I also feel that there is a little bit of a captaincy pressure on him, and that's why I had to put it across as a way an anchor asks a coach in front of the camera. But nice that to have that discussion with people loving this sport, asking out blunt and real questions. That's what I love, and that's why I was somehow forcing Rajesh Gurjar to go out there and answer me very clearly. I can't take answers which says mat pe dekhenge. Has K. Harish underperforming after becoming an injury? Sneha Sharma, yeah, totally. Just the moment of that injury is not recovered well, and yes, K. Harish today needs to just overperform himself. He's got to prove it for himself than anybody else, because he's one lovely player who can't be underperforming for the future of the Nilgiri Knights in this series as well. Right, I think we've set up this Eliminator number 2 very well, as Ryan will be joining us. He's knocking on my doors. We will get Ryan inside in very soon after this countdown and get this match started. Right, interesting as the Aravali Arrows have won the toss. And Ryan, good evening, Ryan. As Raki gives the whistle to go ahead. That's your whistle to come in as well. Oh, perfect. I always love to start off with a whistle, it makes me feel I'm in the game as well. As K. Harish will initiate the proceedings of this Eliminator 2. And, as the question also came in, he's back from his injury, and this is where he has to outperform and showcase this. Arm twisted him into the question.
right? You thought so? Yeah, well, you can say that, and at the same time, yes, what he said is also true. And as long as you stay within, you know, the brackets or the boundaries, you're well enough good in order to be an aggressive player. Has he gotten the touch? That is a very well executed running hand touch. Both of them are claiming it on their behalf. Not given. Not given. And Mari Muthuselvam is not happy with that. Oh, we'll have to go back to that replay and watch it once again. As Sahil Bhangra will try it out. If nothing happens in this raid, I don't think so. Sahil is ready to go deep inside in front of Velavan Muruganandan. Oh, as I just said, nothing to do. K. Harish, what were you trying to do? Oh yes, error there by K. Harish, trying to go in for the ankle hold, and just when we thought, okay, Velavan wouldn't go for it, the player next to him went for it and gave away the opening point of this match to the Aravali Arrows as Sundara Vishwakannan steps in for the Nilgiri Knights and he gets the opening points for the Nilgiri Knights in this eliminator. He's just continuing from where he left off. Aftab Khan, that left cover, did not go full-heartedly for the dash. And Raki wants the Raider to stand back. Oh, just no conviction in the dash. Yeah, Raider safe. Raki wants it to just sink and see if he had stepped into the lobby. Aftab says sorry. If we have that replay of Mari Muthu running across and having a hand touch. Oh, this is so quick. Rohit Beniwal. He didn't even take any guard. He just went straight to Velavan. And Velavan was not ready. Wow, what a running hand touch. Yes, Rohit, let's call him the hitman here as well because how quickly he went in and took that touch using his left hand. That was very well executed as the Arrows get the lead. Man, what I really was impressed. Now running hand touch, no. Ankit Jat says no. Now if we have that previous raid where Mari was claiming on Ankit Jat, it was not given. We wanted to just see how true Mari was. Hariom Chaudhary try something. Oh, he just faked as if he was slipping over. And he's just made a fool out of Aftab Khan. Is it Chetan Chaudhary? No, it's Chetan Chaudhary. Come on. The captain. Right. Ran, you need to tell me in how many times in basketball we have seen this. Of course, football, all are artists, all are real good actors. But Mari Muthuselvam exhibited one. Dash comes in. Bonus plus point. And bonus plus one from right cover. But we'll just go back to that acting bit, what we saw from Mari. Oh yes, as we take a look at the replay of this good raid once again from the Aravali Arrows, they're starting well there. In terms of acting, yeah, I mean, that is smart. You know, if you can do it, you're one of the smartest players, and sometimes you don't have to be the most aggressive or the most skill-based player. If you know how to, you know, use your mind and execute it at the right moment and fool the opposition, you can be a clever player, and that's what he did over there. And I'm sure it happens in the best of sports executed by the best of players as the Nilgiri Knights get one more touch point coming in. Yeah, I think Aftab Khan is not feeling okay with that left cover. And immediately we saw Chetan Chaudhary asking for another player to be ready. I think he's asking Dev Gurjar to be ready. Now watch Chetan Chaudhary there. Yeah, he looks at Aftab Khan and then immediately turns towards the bench and says, Coach, no, we need to change him. Right, now, number 6. Watch out, left cover. No, they're okay to give him the bonus and send him off. Is it? No, no bonus. Yeah, because you keep on fake claiming everything. The referee also won't agree to you. Hey, Ran, I wanted to have a chat with you as well, being the basketball player, and I was so much very involved in yesterday's tackle. One more tackle was amazing. Sundar Vishwakannan is amazing as well. Running and touch on Hariom Chaudhary, does not go back. That's a solitary one. But yesterday, Ran, I don't know if you caught that glimpse. Arul Nanda Babu of Palani Tuskers, you know, he was tackling against Durgesh Kumar, one of my most valuable player of this series. He just dunked him. You know dunking, right? Shaq O'Neal's famous dunks. Yeah. He dunked him on the right corner. Can you believe that? And dunking Durgesh Kumar is not funny. Oh, this is also not funny. Second error from the right cover. 1 point, Aravali Arrows.
That was literally a dunk. What happened yesterday? Seriously. No, right corner. He gave a lot of room. Durgesh wanted to go inside that chain. And he was jumping in the air. And there was a strong dunk. It really reminded me of Shaq O'Neal. Wow. Wow, I mean, that would have been a pleasure to watch. What I'm going to do is right away, not right away, of course, after this match, go in and try and get a glimpse of that, as Harish here has quickly gotten a point, and the Nilgiri Knights will tie the game with Harish getting that point, and Harish is back scoring points, and this is what we want to see. Hopefully he can captivate further on. My God, the actor goes out. How did this happen? Oh, there you go. Running attach, and the left in does not go back in time. And he wonders why he sees the cover defenders. Right, this is the big eliminator. Velavan, watch out. Goes back in time. And there, Sundar Vishwakarnan. He says, hang on, my bull. Don't go raging like that. And all the control is in Sundar Vishwakarnan's hand. Brilliant to see that control on Velavan's hand being inside Sundar Vishwakarnan. And yesterday ran in the post show, that's what Sundaran said. I asked him, how did you go out there and cope up everything? He said, no, the team's morale was down. And also Mari was feeling a little low. I had to go out there and pump in a little bit of an adrenaline. And, that's how we got to that winning post yesterday against the Chola Virans. And nice to see today Sundar Vishwakarnan controlling that left corner. That raging bull which does not have any control on its head. Yeah. And he's here. He would have gotten the point here. It should be Sundara Vishwakarnan's point. One point, Nilgiri Knights. And totally agree that. Oh, guys, relax. It's fine, it's all fine. Back hold, wonderful from that raging bull. Today, it was almost close for him to be called as Pallavan, but it does a relevant job with Sundar Vishwakarnan coming in and the dangling hand taken care of by the right covers. Right. Good work, very good work cohesively of that defense. K. Harish started off to score points. The question that was being asked, has K. Harish been underperforming after his injury? Yeah, that's a fact. But he needs to overperform himself is what I said. Ryan, generally, as players, me and you can really speak about this. How do you cope up with injuries? Because player life and injuries are like trophies and medals on your body. Yeah, very, very true. I think the most important aspect in regards to an injury is to immediately recognize or identify the right injury and the right treatment and stick to that. That's a mistake that we players do. And take a look at the mistake by the Raider there. He's gone too much on the inside and he's exposed himself to the defense, which is why he will go back to the... Yeah. Please come. Totally. Wonderful single thigh hold. And brilliant work. Velavan has got the green card for a foul play. But Ryan, only for you, my friend. We are showing you the famous dunk of Arul Nandababu that happened yesterday. It's a do-or-die raid. After this raid, maybe it's a super tackle situation as well. Oh, he wanted to run over, but then there was a strong back hold. 2 points. Yeah, 2 points. Good work from Ankit Jat. He's been the highest super tackle achiever. Jersey number 81. Foul play. No foul play. He wanted to go for the foul play. Ryan, check this out. You dig somebody else's grave, you always fall inside your grave. Chetan Chaudhary wanted to go bang hard on Harish. He just slipped and crossed over and he just fell on his own weight. That's looking funny, guys, really. And look at this, Hariom Chaudhary going in for the defender as a raider. I wonder if nothing goes right. We will have the dunking. Ryan, are you ready to relive that moment? Definitely. You can see my legs. I'm just waiting for it. I'm anticipating something and I just can't wait to get it on. There you go, all yours. Explain this. How was that? Remember Shaq O'Neal? I mean, I think Shaq also would be impressed after taking a look at that. You have to exhibit true power. As Sundara Vishwakarnan, has he stepped into the lobby? Yes, he has, without a touch point. And a technical point to the Aravali Arrows here. And the spirit of the Kabaddi award of this match goes to Sundara Vishwakarnan. He agrees immediately, saying no hand touch. And people were claiming, look at Ankit Jat seeing the send-off.
Not needed, not needed. Thanks to our entire team, Ashwin especially, to go out there and try and show Shaq O'Neal that we have a dunking in Kabaddi as well. Oh, that's a surprise tackle! Velavan Muruganandan, is it? No, he comes in from that in place. And that left in. Go back, actor. Go back. And even the people are shouting out there and saying, enough. Go back, we've seen you enough. And this is bad. The people are against the Aravali arrows now. Wonderful work from Velavan. Oh, man. Wow, I mean, that is such a powerful block there, executed on Brajpal. Like, it is so strongly done, and that is a statement, and this is a statement, a response statement by the Aravali Arrows, and you can take a look at him flexing it and his teammates supporting. This game is gonna be a thriller, my friends. It's so intense already, and the score is 8-9. Yeah, we know that, but yeah, once again, right in. Look at that, Ren. That's again a surprise. There's Navpreet Singh, one of a trusted raider, correction. Navpreet Singh has come back. Of course, the Raiders are struggling. Sahil Bhangra, of course. I like, should I say only him on the Kabaddi spirits? It'd be wrong though, but he's very good. He's very good as a Kabaddi player. He knows how to respect the other players. Never fake claims anything. Good lad. And those are the track runners. That's Harshita in that fluorescent green. Am I right on the color? Ran. Oh, wow, the athletes watching other athletes, and this is what it's good in sport, right? When other players from other sport go and experience the other sport, support them. It's a good moment, and I think over the past few days, also throughout the entire series, there have been a lot of athletes from different sports coming and experiencing the Yuva Kabaddi series, isn't it, Naveen? Yeah, totally. As Navpreet Singh steps in, he's been one good raider, has not got many opportunities, but whenever he's got it, he's delivered. Yeah, no, I agree. Every other athletes coming in and watching here, because Chamundi Vihar Indoor Stadium is a big arena. There's a Khelo India hockey turf that's around. There's a big track for all the track runners. There's a discus throw set up. There's a shot put throw set up. There's a javelin throw set up as well. And there is a hurdle races that's been practiced every morning. All this happens when we get up and run at 5:30 in the morning, so we can visit everybody. That's what I do. That's how I know everything of what is there. Sahil Bhangra wanted to break the chain and go away. Does not get it. And good that Sahil Bhangra does not protest hard. And look at the Nilgiri Knights also helping him out. See, it's a good, decent send-off. Saying, sorry, my friend. That's what happens when it's Sahil Bhangra. But when it is that actor, I wonder which movie actor he is. Right. I mean, Number 6. Yeah, number 6. Yeah, so when he comes in, this does not happen. Yeah, do or die rate. Ryan, you didn't say anything of my color knowledge. Fluorescent green, that's such a big, terminology to be accepting. But Sundar Vishwakandan is claiming, I think, 1 point. Yeah, do or die rate. Defense getting too anxious. Yeah, we can see that error coming in there, and that's the penalty that you have to pay, in the form of a point being given to the opposition. And well, Naveen, in terms of your color, only thing I want to say is you could have explored a few other options in terms of putting that color out, Is it? Oh my God. Goodness gracious, I thought I got it right. Fluorescent green. I never knew what was that until I saw that t-shirt on Harshita there. And I'll tell you what about Harshita. I've been very impressed with her as well in the morning when I see her run. She's that 400 meters runner, single runner. She's not in that relay team. It's a super tackle situation. And there is a relay happening between Chetan Chowdhury and Navpreet Singh. And Ankit Jad has been left alone. Goes back, Sundara. Very intelligent. And she's got that, record for herself. She's timed herself and she's told me that. That is her father, by the way. That fluorescent green girl, Harshita, that full sleeves shirt is her father. Don't ask me his name, Ran. Wow. I did not ask it. But I'll tell you why I respect that man, because he sent his daughter out for being a track runner. He's invested so much love and dedication towards her. Look at that fluorescent green. There you go. She's sitting right up there on the top stand. She's got a record of 58, 59 seconds of running a 400 meter. Whoa. Can you beat that? Hima Das's record itself is 54, 55 seconds. Hima Das, one of the best runners.
Now Preet, can he be the best raider in this do-or-die raid, Ryan? Oh, he will not come out as the best because the tackle has been executed. A little bit of a jersey pull there. I'm sure the warning will be given. And we can see the track athletes appreciating that move as well. As the Nilgiri Knights get one more point. And we can see the players having a bit of chatter there. Jersey number 9, jersey pulling. Wait, let me see where the jersey pulling was. Let me see. There was. Manikandan Sudalamani, agree to it. Don't stand there and protest. Whichever part of the country you are, if you don't respect Kabaddi, you don't get my respect. Simple. Do what I read. Super tackle. That's a brilliant escape. That back jump of Harish is a classical one. As Chetan Chaudhary goes for the double thigh hold, does not grab him. Harish, Ryan, as you said, is back. Oh yes, Harish showing signs of, the classic Harish as you stated, and that's what the team wants, and that's a dangerous sign for the Aravali Arrows, because if Harish also adds on to the turmoil that they can put across on the Aravali Arrows, it will become difficult for them. And the Arrows on the verge of an all-out here. Ankit Jatt has the responsibility to save his team in the next 20 seconds in this raid, possibly revive a man and make it easier for them. Oh no, looks like he's just fallen there. I think he's going to have a bit of a struggle. I think his knee already had an existing problem. That's why he has the brace on and he will get tackled, which means the first all-out has been inflicted by the Nilgiri Knights. Unfortunate. Very, very unfortunate for Ankit Jatt. Oh, I don't like to see that from any Kabaddi player. He ran in there. And not this. We wanted to see the small little twist on his knee. And then later, look at this. After the tackle, the Nilgiri Knights' defender just pat his back and send off. Can we listen to Rajesh Gurjo? कैच हो रही है. डिफेंस रोको भाई, डिफेंस. चेतन, डिफेंस खराब कर रहे हो थोड़ा. अभी खूब 22 मिनट का मैच है. तो चलो खुल के खेलो लेफ्ट वाले को. Lovely, good words, appreciative, and defense has to be a little tighter. That's what Rajesh says. Oh, let's go back to that raid. No, come on, he's still limping. He's limping, Ankit Jatt. No, that's not good sign. He's on his haunches. Oh, that's not looking good. Right corner was needed to be there. Oh, he overran himself. He twisted his left ankle, then the already injured right knee. Oh. And a moment there, Naveen, if you noticed, I think the crowd, including the track athletes, were predominantly supporting the Nilgiri Knights. Whenever they scored points, they were making noise. But the moment Ankit Jatt, he had that injury, and right after that, the Nilgiri Knights got the all-out. You saw the track athletes were not celebrating that moment because, athletes do recognize such moments and they want to respect the players. So that was a good moment that I observed here. Totally agree with that. Ankle hold. Let the referees give you the points. Raider save, 2 points. 2 points on that right flank. Santosh Srinivasan and K. Harish both attempting the ankle hold. Right. Good that he's controlled his over-expressive moves. Right. Thanks for that. Celebrated nicely. Yeah, good point, Ryan, from you. You see, I'll tell you something. It's not just the athletes. Generally, Indians, anywhere, they like players being humble. They like, of course, politicians also being humble, but in a true fact, because why am I referring that? Because there's a movie called Humble Politician. You know that, right? The famous Kannada movie? Yes, definitely. Hilarious one. Now look at this, Ilavarasan. What are you guys doing here? Rajay Muthaiya, Ilavarasan. Come on, guys, you're on a break. Go out there, explore Mysore. Mysore is a culturally historical place. Back hold. Wow. Fabulous. Blinded there the actor was. And look at the defender actually helping him up. I don't understand what Ilavarasan and Ajay Muthaiya are trying to do here. Who's allowed them inside? Come on, guys. You reach the finals and you want to see every match. And Ilavarasan and Kabaddi are like, I think what? Right. Look at him. Look at that. He's a coach. And he's come out there as a black t-shirt. Next to that white t-shirt fellow, the white t-shirt fellow is Ajay Muthaiya. He's come out there and enjoying the match. Coach, come on. I mean, it's like, I think it is Karnan and his Kavachakudalam, his armory. Karna was born with armory, no? That's what Ilavarasan and Kabaddi are, I think.
Yeah, possible. It's often good to see, you know. Sometimes when we see coaches sitting there, we often think they are scouting, but for sure, this man is not scouting. He will also be planning out strategies, but he's a genius, of course, UV umpire, because he's Nilgiri coached a right team. challenge, 1 touch point. Our decision, no touch. Please review. Perfect, Ryan. Yeah, we'll continue that up, but I'll tell you why Marimuthu has gone in for this review, because it is one review per half. So he does not want to waste this. This was the last raid of the first half, and from yesterday, Eliminator number 1, we've got that rule in the favor of teams for one review per half. So that's why they want to exercise this. And I'll tell you something, as Rambir Singh gets busy, third TV umpire. Palani Tuskers visited the Chamundi Hills and the Mysore Palace today. That's a breaking news. Lovely. They also made some social media posts on our official Instagram channel handle on the reels wise. Vilavarasan, where was this talent hidden? Right. We want to see that reel. Review successful. Review is successful. Nilgiri Knights. Nilgiri Knights get a touch point, and they will be also very happy that the lead goes to 18 now in the first half. Ryan, all yours. Half time, change the court. Yep, and the halftime whistle has gone off, and the Nilgiri Knights are the team who's come out stronger in the first half. We can take a look at this. 18-11, Aravali Arrows had a good start as well, but that all-out was the difference. As we take a look at the stats, rate points 9-7, where the Nilgiri Knights got 2 more than the Aravali Arrows in terms of tackle points. That's been the key difference. 4 points separating the Arrows and the Knights. 1 all-out inflicted, which is why 2 more points, and that 1 technical point which is given to the Aravali Arrows. So at halftime, the score is 11-18. We will slip into a short break and be right back. Welcome back, everybody, as we are in the very, very crucial eliminator number 2. As the start was almost equal. The first quarter of the first half belonged to both the teams, as it was a nice attack from the Raiders of the Aravali Arrows, and then the defense of the Nilgiri Knights actually fumbling. And then when Marimuthu Selvam started the raid pointers, the defense of the Nilgiri Knights started to fumble a bit. And then at the end of the first half, it stays like it's in the favor of the Aravali Arrows because of the all-out that has been inflicted. So that is more needed. Where the all-out was inflicted, that was really nice. Where without that all-out, it would have been a little tough for the Nilgiri Knights to go out there and get that lead as well. And this was a super tackle. Now look at that, Chetan Chaudhary wanting to go ahead and actually fall on the Raider, just falling in his own grave. And here in the Chamundi Vihar Indoor Stadium, it is nice to see that the people who have come here to watch want to watch Kabaddi for its highest spirit. They are backing the Nilgiri Knights because they don't want to have unwanted aggressions. They don't want to see any dramas, any B-grade acting. Ryan, can I call him that? Yeah, well, it's often the ethics. I mean, it's the standard of sport, right? You always have 2 sides to a story. Every match is a story in itself, and there's always 2 sides, and there are reasons. And I'm sure if we look at the greatest moments of sport, you have players that would join a team after leaving their home team. That also leads to a different sort of aggression in the stadium. So, I mean, that is an exciting factor of sport as well. Yeah, totally. But it's a hard fact that people will love people respecting the sport and respecting the opposition. There's a substitution that's happened. Sonu Sheron has come in. Sahil Bhangra has been good. If the Nilgiri Knights can... Oh! That's a surprise attack. Velavan, stop putting out that pulling off the ankle hold. I did not like it. No, don't do this. Velavan on that left corner. Oh, I think the right cover. Manigandan Nesamani came across nicely, but look at this. I don't like this, Rand.
when I can say that number 6 is going out as a B-grade actor, Villain is trying to behave like a B-grade villain. Come on. Well, and the Nilgiri Knights now a 8-point lead as the second half has begun. And Naveen, this is a very crucial moment for the Aravali Arrows because it's do or die. It's go big or go home. Looking at how this team is panned out, how they have played, looking at their strengths along with Nilgiri Knights' weakness, what do you think the Aravali Arrows need to do now? Because the Nilgiri Knights are a very solid side, especially in terms of holding on to their lead. Yeah, that's the Aage Ka Rasta question. That's a good point of discussion now. Now, if Aravali Arrows need to win this eliminator, the very simple point is dry up Sundara Vishwakarnan and K. Harish. Dry them up. It's a big lead of 8 points and you're reduced to just 4 men on court. So just try and just dry them up. Don't allow them those touch points. Try and play in the defense of 4 or 5 max. And oh, come on, I asked you to time up. Not like this. They've opened the floodgates. The defense, and look at the sound here in the Chamundi Vihar Indoor Stadium. That's a super raid. They are definitely backing the Nilgiri Knights. Ah, this is horrendous. Yeah, and that's way more than a super raid because this is such a damaging raid to the Aravali Arrows because it puts them on the verge of another all-out. And this is not what the Aravali Arrows want, as the onus is once again on the Aravali Arrows raider. This time it's Rohit Pancholi coming in with the intent of saving his team. As you know, it's a half affair. It's 11-22. The Nilgiri Knights have a massive lead. Rohit here will increase that lead for the Nilgiri Knights as the one more tackle point plus the couple of all-out points will be given. And Nilgiri Knights up by 14 points. Wow. Go to that replay. I know why Rajaram reacted like that. He was asking Velavan, why did you have to go out there and show that extra aggression? And he's hurt. Can we go to that replay? Now EVS Ram has it. Now look at Rajaram. He says, Amaidi. Amaidi valadanga. Porme valadanga. Simple. Now look at Velavan. He went in like this, like a raging bull and showing that unwanted aggression. And total, I don't want to call it unsportsmanlike conduct actually, but now he did all that work and he laid flat on the mat. What was it necessary? What was it necessary, Ran? Double thigh hold! And the dangling hand has been taken care of it. That's good from the right corner, Ankit Jat. 1 point, Aravali Arrows. Yes, very good indeed. A strong, intentful start from the Aravali Arrows. This is what they need to do across the entire game. Go in confidently because you're trailing by a big margin now. So you just need to play with confidence. You can't hesitate in any given moment. You have to go in, go all in, you know, showcase your Josh Jazba Junoon to ensure that you can progress to the next round because it is obviously going to be very difficult, but nothing is impossible as Rohit is getting one more point. 1 point, Aravali Arrows. Along with the Josh Jazba Junoon, they will have to have Jahan for the Nilgiri Knights for sure. And yeah, Chetan Chowdhury on that right corner. Because yeah, Ankit Jat was injured. Oh, wanting to go single-handedly. No, that's not right. It's really not right. Nesamani. 3 successful points here for the Aravali Arrows. 2 raiders taken off, 1 defender taken off. This is good stuff. Yep, very good stuff indeed. And this is what I said, you know, the defenders, they all know the situation right now. It's not like the previous rounds where you'll come back and play teams again tomorrow. They know that they are battling to ensure that they come back tomorrow in this beautiful Chamundi Vihar Stadium and showcase the talent meeting the opportunity. They don't want their opportunity story to end today. As Rohit comes in, it doesn't look like. Correct. Now just watch what Velavan was trying to do. In that left in, he was trying to go for the surprise double ankle hold. He was right there in that left in position. And good that Rohit actually went back, ran intelligently. Now that's what Harish has to do. He has to run the clock down. Oh, come on! That's a strong back hold! Wow. That's wonderfully done. I asked him to come back. Left corner coming in. It was a solo tackle for sure. Definitely, it was a solo tackle and Harish will be so disappointed. We saw his reaction there that showcased disappointment. Take a look at this. He held on to him. Thought he would get through, but it was very nicely done. He ensured that he dropped his body to avoid the defender escaping.
and the time अपनी out is जिम्मेदारी out, से you will एक listen to नंबर पे coach. जाके तू खड़ा होगा, तू कैच खाएगा, लागा पॉइंट, तू जा, साहिल पॉइंट आना चाहिए. All right. He's asked not to go stand on one corner, and Sahil Bhangra says, I will get you the point, don't worry. He's gone it. And Velavan is in that right in position for going in for the surprise ankle hold. It's a super tackle. All three are defenders. Santosh Srinivasan, Surilamani, and also Velavan Muruganandan. If they give out a point here, that's not good. Santosh Srinivasan is not good when he's backtracking. And a lovely running hand touch by that man who has that Kabaddi spirit on its high levels. Sahil Bhangra. Oh yes, Sahil there. This is the Aravali Arrows getting better of all the raids, especially after that all out which inflicted on them. They've come back very strong. Almost every raid except for that one empty raid has gotten the Aravali Arrows a point. And this could be Aravali Arrows, moment where they can slowly pave their way back into this. And Velavan right here will try to get a touch point. I think he tried for the bonus as well. Question is, did he get it? Did he get a point there? Last 10 seconds. Once again tries the bonus. He's got it. Good that he's got it. Yeah, that's a good work. Navpreet Singh comes in. Velavan should have taken some time. He just drained every energy of his. And Navpreet Singh, that classical back jump was good. Velavan was tired. He should have just stood there. Yep, he was in a bit of a hurry there. And I think what the players of the Nilgiri Knights should do is they should just take this moment as a moment of a breather and, calm themselves, compose themselves in this game and know that they are still in the lead. They still have a very big lead. Even if the all-out is inflicted, they will still be in the lead. So the players should not look down. They should not showcase those gestures. I know it's normal, but you should not showcase the gestures of deceit when you give away points like that. It's all right. You need to shake it off as Mani Kandan here will come and try to save his team from that dreaded all-out. Has he gotten a point? This is, look at that, the reactions of plucking the hair out. This is top class from Manikandan Surilamani. Did you ever believe, as a raider, as a defender walking in and getting that touch point? How? Back kick, my God, what a skill. Take that. And he's got a raider. Look at that, Rohit Beniwal is suggesting that I was so back. छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो, हो गई जो गलती. मेरी बात सुनो, डिफेंस रोक कर खेलो. डिफेंडर को तो बोनस मत देना, मारना पीठ पे डाई यार. फ्री का पॉइंट दे रहे हो, चलो. मारना पीठ पे डाइव. Okay, not मारना पीठ पे. Rajesh Kuchar has told it very clearly. मारना पीठ पे डाइव. Hear that out properly. Right, Abhi Kumar has come in as a raider. Sahil Bhangra. Can he actually go back and ask the Raiders to come in because they're running away of Raiders? Sahil Bhangra gets Abhi Kumar. Wonderful work. Aravali Arrows, jersey number 6 out. Yep, a very good point there coming in. He knew the pressure was on the defender there and he went straight on, got the point, and Sahil got back quickly. And in regards to that timeout there, Naveen, you heard what the coach said. So do you reckon he's the director behind all that acting? That's why I asked him in the just a pre-build up to this match. I asked him, is it needed? Is that aggression needed? He's promised that it's going to keep it under Kabaddi spirits, which I'm okay. So he's directing it under Kabaddi spirits. The actor needs to perform under the spirits. This is a strong all-out. Yeah. That's much needed. Diving ankle hold from that right corner. He's got the bonus point though. Nevertheless, so after the all-out, they've come back with the double vengeance. Is the Aravali Arrows. Yeah, shout out to the Aravali Arrows, especially the speed in which they executed this all out. It was done in a matter of a few minutes, especially after they came back all in. And that shows they're playing smart. Bonus. Our decision, bonus point. Please review. Guys, we were just praising you. Right? I know it's one review per half. Come on, they're going to lose this. The landing foot is clearly over the bonus line and the trailing foot is in the air. You can see the daylight. You can see the shadow of Surilamani's legs and shoes. Oh, that's my perception only. The decision depends on the TV umpire. But
I'll tell you what, have they got their review numbers wrong? It's one review per half. Review unsuccessful. Unsuccessful, Bonus point, Nilgiri Knights. unfortunate, 1 + 2 3 points. unwanted, Aravali and unnecessary. Aravali Come on, Aravali Arrows. Arrows. No more reviews. No more review for the entire Eliminator now. Substitution, Nilgiri Knights. 18 in, 6 Yeah, out. gaining 3 points and losing a review, it's you've gained something, but it's a big loss. You never know over the next 10 minutes what can happen. And the stakes of this match being so high, you could have used the review later on. Nevertheless, shake it off. 7 points is what's separating them. Can Sahil decrease that deficit as the Arrows have the momentum on their side now? Very important, especially in an eliminator, the momentum that you can get. And that's why the Nilgiri Knights should ensure that they stay alert and don't let the Aravali Arrows continue this dominance. And no bonus point for Sahil Bhangra. Oh, that bench is actually feeling the heat. So, for Nilgiri Knights, every match has gone out there to become a knockout match. Just to reduce some tensions here, and I'll tell you what the Nilgiri Knights do. Oh, Sundar Vishwakannan has got 2 more points. Redder save. Left 2 corner, points, Nilgiri Knights. Jersey making number that 12 and first 20 out. move. And then the defender following him, Rohit Beniwal, not needed at all. Come on. From that left in, why? Just that anti-blocking skills. This is why I asked Rajesh Gurjar, how was your mindset when Rajendra Pakar was not available? See, all that build-up to the match, all that just a pre-stage setup of the questions, it's so necessary. Well, I'll tell you, just to reduce some tension. No bonus given, no bonus given. Rohit Beniwal can't believe it. Ryan, Rajaram has a rule. Now this is an amazing rule inside the team setup, and this, by the way, is a total internal secret that I'm letting out. Okay? Yeah, see, that's the advantage of having lunch with the coach. Go for it. Right. So the rule is, if you misbehave in any circumstances inside the team, like say, for example, if you're coming in late for the morning drills, if you're coming in late for practice, you will be fined. I'll tell you what the fine is, as this do or die raid. Santosh Srinivasan is very good when he attacks the raider. And Arshita, I think, is making that loudest of the noise. All that 400 meters of running is there, going in the shouting today. Yeah, double thigh hold, frontal, nice one. So the punishment is, if you misbehave, like anything, if you forget wearing your ID card, if you're, found to be loitering around alone, breaking that rule of conduct, anything. Right. The punishment is, you need to treat the team. You need to treat the entire team with, everybody gets half liter of milk. Half a liter of milk packet to everybody. Biscuits and, curds, buttermilks, and all such healthy items. Okay? And if nobody commits any mistake, everybody thinks, oh my God, today my 200 rupees is going to go off. Oh, 2 points. 2 points for sure. Both the covers are taken off. 2 points. Yeah, very good decision by Raki. Both the covers went for it, but it was an advanced tackle. Sudalamani and Nesamani, come on. Why did you have to do that? Nesamani says, I had him in my grasp. I think Sudalamani sat early. Santosh, good that he did not touch him. So if nobody commits an error, the coach buys them the treat. Can you beat that? Wow. The coach buys them. Sundar Vishwakannan attempts the bonus on a do-or-die. He is very confident. Chetan Chaudhary knows that it's a bonus. That's why he's complaining about that for the other defenders. And I'll tell you something. Yesterday, Sundar Vishwakannan got the Best Raiders award. Today, I saw it in my eyes. I'm not bluffing and making this up. I saw it in my eyes because I share the same floor with the players as well. I saw them bringing 12 packets, half-liter packets of milk. I asked him what? And Sundar Vishwakannan said, no. तुमको बच के मिलेगा क्या? एक बात बता. That I got in the Best वैसे भी Raider रहे हो. हार तो वैसे भी रहे हो. सक्सेस होगी तो. Rajesh. सक्सेस नहीं. काट देगा. इसको मारना जरूरी है. सीधा यूं करता बोनस मार. अरे वो तो एक पैर पे मेरी बात सुन. एक पैर पे तो पहले ही खड़ा यूं करके बोनस मारा. मार देना उसके. देगा तेरे को सपोर्ट ही है. सोनू सपोर्ट देगा. तू चल. रोहित पॉइंट ला.
Rajesh needs to cool down here and try and connect with the commentary box psychologically. I am asking the defense to try the Raiders out. And Rajesh Gurjar wants to go for the attack. But I'll tell you what, Ran, if the defense succeeds, it's just 1 point. But if the defense fumbles and falters, it's multiple points going off and you're getting near the all-out that you don't want to face it again. So if the defense can try the Raiders, that's what is more needed. And the Raiders need to go out there and get the points. Now Aravali Arrows' defense will not get you points. It's the defense to be drying up the Nilgiri Knights' Raiders, and it's the Raiders that needs to now open the Krishna Rajasagar Dam of 8 points. But nevertheless, Very well. good connection, isn't it? But what do you think about this rule of Rajaram? And we were also very speculative about when somebody gets the best raider award, best defender award, that prize money, how is it going to be divided, or if that person is going to pocket it for himself. Today I saw it in my eyes. I'm a live example. I'm their advocate on this. They definitely bought it out. Sangeet has never bought us anything. He's sitting there with the spectacles on. That is Sangeet. Oh, Navpreet Singh. Is it? No, it's Rohit Beniwal. Yeah, Navpreet. It does not rate. It's Rohit Beniwal. And look at him. Sangeet getting animated. Wow. Sangeet, close your mouth. Close your mouth. Now he's good. Now he's good, only with a smile. It's a lovely Malayalam lad. Ran. He's like you. Oh. Yeah, he's a Malayali. Hi Sangeet Sugamano. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ല, എന്താണ് പറയണോ? ആളുടെ സംഗീതത്തിന്റെ അവിടെ മാരേജ് ഫിക്സ് ആയി, അറിയോ? സോ കല്യാണമായോ? കല്യാണം ആയിട്ടില്ലല്ലോ, അവിടെ മാരേജ് ഫിക്സ് ആയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ സുഖം പോയില്ലേ? Good Malayalam there, Naveen. Good Malayalam and a good piece of Kabaddi here once again, as the team coming in and ensuring that the Raider does not escape, and another point to the Aravali Arrows. Oh my God. Right. Oh, Santosh Srinivasan was standing in the right in, and he gleefully accepts that the hand touch was there on the running hand touch from Sahil Bhangra. Yeah, Sahil here quickly getting that point, and the Aravali Arrows trailing by 8 points. Last 4 minutes and 20 seconds remaining in this game. It's going to be very short 4 minutes for the Aravali Arrows and very long 4 minutes for the Nilgiri Knights, as they're trying to hold on to the lead, while the Arrows just desperate for that comeback in order to save themselves from this possible elimination. No, you cannot do that, because Sundara Vishwakanan has gotten one more point. I've been telling them to try the Raiders up. Don't give the points is what I'm trying to say. Did I say some jargon or what? The meaning I say when you need to dry up the opposition Raiders is not give them points. Chetan Chowdhury, come on. Captain Navpreet Singh, what are you trying to do in that left cover? Ankle hold. Velavan Muruganandan puts it. Stop it. Enough. Tackle is successful. That's fine. 1 point, Nilgiri Knights. Wow. Good tackle. This is where the Nilgiri Knights are showcasing, their agile mentality in crunch moments, going for such a courageous move. That shows why you're a team with the top caliber. As, oh man, all of them getting a piece of it and ensuring that they get the point. There was a foul play, green card given away, and I'll tell you what, Ashwin is, I think, decided in his mind that from the next series, from the next edition of the Yuva Kabaddi series, we're going to have a Kabaddi Spirit Award. That's under discussion on serious terms. We can't use the word of whatever that good play, better play, dark play, bright play, whatever it's called as. We can't use the term. So we are trying to have a Kabaddi Spirit Award. What's your call on that? Actually the parameter to actually gauge that one is the number of green cards or yellow cards. If the team has got a lesser number of green cards or no green cards, they are right on top, and they will be awarded for that, the Kabaddi Spirit Award.
What do you reckon? Yeah, I mean, it's good to see Yuva Kabaddi series taking initiative. Even if you go to the website today, you can see about how they have the code of conduct, the rules, the ethics, everything put across. And that's very important in order to establish the, top level of professionalism in all of these players, because they are the future of Kabaddi, as we take a look at how all of them have become, how they start the edition and how they are at the end of the edition. It is definitely going to just, help the sport, and that's what we want. That's what we would love to see in any sport. And shout out to the entire Yuva Kabaddi series team for putting that across, or even considering to put that across. Yeah, and also we have introduced that clean and safe sport this edition, because we are keeping everybody away. Right, listen, you can hang on to an adrenaline rope, but you can't dupe yourself. Time out. D-U-P-E. I hope you got what I'm trying to say, Ryan. As a player, don't repeat and correct my spelling. I am just telling D-U-P-E. I don't even want to use that word. क्या हुआ? रेड पे क्यों चल रहा है? Rohit Beniwal is trying to go down. उसके रेड ही नहीं मारा, बार-बार मारेगा तो घंटा टूटेंगे वो. Oh God. Right. I understand the aggression from Rajesh. You can't keep raiding every time and tiring yourself up. Right, you're the captain of your basketball team, Ryan. You're just trying to go out there and show that video of dunking from the raider. Marimuthu Selvam is not dunked himself, but he wants to duck under the defense. But somehow, Rohit Pancholi comes across, not Rohit Beniwal. Rohit Pancholi has the third line of defense. Stops Mari. Yep, a very good stop there. For a second, the Raider also thought he saw a clear way to get back, but a very good initiative to go stop him. And yes, Naveen, I mean, more than the dunk video, I'm probably going to inflict the rule which you spoke about today on my team. And that would, thank you so much to you and the coach of the Nilgiri Knights for giving me that idea that I can do. I can possibly tell them, give them rewards if they do well, and if they do a punishment, I can, reap benefits off of them. Yeah, totally. Velavan Muruganandan today has played like Velavan, and that is what Rajaram told in that pre-build-up of the show. I warned him saying, Velavan, if you go out there and play unsportsman sort of a contact, I'll call you Palavan. And that aggression has actually burnt him up. He's just riled himself up. 10-point lead. Now Nilgiri Knights are certain to go through. And Aravali Arrows probably getting eliminated. Oh, and I wanted, as he stepped into the lobby, looks like, and I wanted for the eliminating team, or the team that is getting eliminated, to put up a fight, but today Aravali Arrows have failed even there. They haven't put up a fight. All credits here for K. Harish to managing it out very nicely in the absence of Vasant Murugan and Kesavan Raja, both of them not bodily doing good. A bit of a sore throat and cold, as the monsoon has arrived already, but we are still in the summer edition though. And the Aravali Arrows will have to say goodbye for the Yuva Kabaddi series. That's not good. It's really not good. We will miss out Rohit Beniwal, we will miss out Sahil Bhangra, we will miss out, of course, Rajesh Gurjar, and Santosh Srinivasan has a handshake. 10-point big lead, and the Nilgiri Knights have won their second match on a consecutive night. Yesterday it was against the Chola Virins, and today it is against the Aravali Arrows. They have eliminated two strong teams to go ahead and play the Chambal Challengers in that all-important match. The Chambal Challengers, of course, losing two matches, and they will be playing against the Aravali Arrows. Rajesh Gurjar, we are really sorry that we will be not seeing you from tomorrow, but thank you so much for putting out that bit of an aggression. Of course, sometimes just going overboard, but you've been a good coach. You need youngsters in the outfoot, and he's put out the right foot forward, isn't it? Yeah, I mean, he's been a spectacular coach, especially midway through the season. There were times when, I'll be honest, I did doubt as to, several decisions of his, but the way he came back after that, especially in the second half of this entire series, the way he led his team towards, becoming such a strong side, that played such good kabaddi.
However, you know, they fell short in this match, but a lot of learning for all the players. That's what this platform is for. And I'm sure his players got to learn a lot through his guidance and also through the Yuva Kabaddi series. The tournament also would have gotten to learn a lot from such an experienced person like him who's been part of the professional setup as well. So it is a win-win situation for everyone. At the end of the day, Kabaddi wins. Yeah, totally. But I think we've had our concluding talks for the Aravali Arrows, but it is so nice to see this one. That actually, for me, will be the Kabaddi Kamal moment. Manigandan Chudalamani going in for the back kick and saving that all out. Just imagine if the Nilgiri Knights were all out on that first instance, and it would have been a little more tighter of a contest. But Manigandan Chudalamani going in and having that back kick was just phenomenal. But twice in 2 nights, Nilgiri Knights have had the night in their name. Right, am I a poet? I didn't even know it, right? Yeah, well, you're a very good poet, honestly, in terms of, you know, catching those words and putting it across. Maybe one day you should just, you know, sit and try penning it down. You never know, you might be on the literature book of one of the high school boards. As, My God. We take a look at the... Yeah, go for it. Yep, we take a look at the match summary. Full time 37-27. The Nilgiri Knights coming out on top. Rate points, 5 points separating them. Nilgiri Knights doing well. Obviously, Sundara Vishwakannan was the key raider for them in this match. Tackle points, Aravali Arrows got a few, but 3 short compared to the Nilgiri Knights. Couple of all outs for the Nilgiri Knights. Not to forget the comeback by the Aravali Arrows when they inflicted the all out. We thought things would change after that, but it quite did not, as the Knights held on to their lead. And the best raider was definitely Sundara Vishwakannan here, Naveen. Yeah, back to back. He's got to treat the team, and he will be more than happy of treating the team. Wonderful. Sundara Vishwakannan, yesterday also he was the best raider. Today also he is getting that best raider award. Wonderful to see him get that 10 rate points out of the 13 raids. And this today is deserving for Velavan. He got out there and made sure he did not commit any errors. He was a little over-aggressive though, that I didn't like. But yesterday, his best defender award was not justifiable because only 3 tackle points and he was coming in to get that best defender award. I was, complaining Harshit, saying, Harshit, come on, if you give that to him in front of the camera, people are actually going to tease you than Velavan. But today, he is deserving it. He is much there on the best defender lines. As Chambal challenges versus the Nilgiri Knights match has been there tomorrow at 10:30 a.m. So watch out. Our streaming begins tomorrow, probably 10 o'clock, probably the pre-show if we are trying to go ahead with that. But 10:30 is the match. But the Periyar Panthers will play the winner of the Eliminator number 3, which happens in the morning and at 8 p.m. because the team winning will have to play 2 matches tomorrow. So that's a lot of time to come back, regroup, and re-energize yourself for the Eliminator number 4. So all that is happening is very good, Ryan. As always, thank you so much for all that lovely talk in the commentary box, and hope tomorrow you're introducing that new rule of what Raja Ram has got it for the Nilgiri Knights. Thank you so much for everything. We'll slip on a short break and come back soon for the post show as well.
What a redundancy and a perceptible performance shown by the Nilgiri Knights to beat Aravali Arrows. Welcome to the post-match presentation of Eliminator number 2 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners. First, broadcast partner, Fan Code, Fantasy partner, Dream 11, Physio partner, Department of Sports Science, Jesus College of Physiotherapy, Hospitality partner, Chincho Hodar, our healthcare partner, Ramakrishna Specialty Hospital. In the presentation today, we have Mr. R.K. Shekhar Murthy, sir, ex-national Kabaddi player and professional Kabaddi commentator. A huge welcome in the post-match presentation, sir. ये मुकाबला खेला गया अरावली एरोज बनाम नीलगिरी नाइट्स और क्या शानदार अंदाज में, क्या भव्य अंदाज में नीलगिरी नाइट्स ने जैसी शुरुआत की वैसे ये मुकाबले को समाप्त किया और इस मैच में जीत के साथ बता दिया कि वो तैयार है एलिमिनेटर नंबर 3 में खेलने के लिए। और अरावली एरोज जरूर इनका सफर बहुत अच्छा रहा, बट आज यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सीधा चलेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ। शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट विनर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे नीलगिरी नाइट्स के। वन मोर टाइम, बहुत ही सुंदरता के साथ उन्हें प्रदर्शन को दर्शाया और वो नाम और कोई नहीं सुंदर विश्व कन्नन होगा जिन्होंने बनाया शानदार सुपर 10। लेट्स हैव अ लुक एट हिज परफॉर्मेंस। And now the time for the best defender of the match। और आज बहुत ही प्राउडली मैं ये नेम अनाउंस कर पाऊंगा क्योंकि आज वो सच में लाजवाब प्रदर्शन जिस कैलिबर के खिलाड़ी हैं उसे पूरी तरह से कैप्टिवेट किया इस खिलाड़ी ने। वो है नीलगिरी नाइट्स के वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी स्पेशल वेल वन फॉर हिज ब्रिलियंट हाई फाई। लेट्स हैव अ लुक एट हिज परफॉर्मेंस प्लीज। And now the time for the Kabaddi Kamal of the match। और आज नीलगिरी नाइट्स के शुरुआती साथ में के हरीश वहां पर मौजूद थे और के हरीश ने आकर बताया कि क्यों उनकी प्रेजेंस इतनी महत्व है नीलगिरी नाइट्स के लिए। शानदार सुपर हिट लगाई और मैच को मोल लीड से माउंटेन लीग की तरफ लेकर गए नीलगिरी नाइट्स के। और फिर से देखते हैं के हरीश के शानदार प्रदर्शन को। So that's all from the post-match presentation of Eliminator number 2 अरावली एरोज। यहीं पर हमारा साथ छोड़ कर चला जाएगा। इसके बारे में और ब्रीफ में बात की जाएगी आप सभी के साथ इन द पोस्ट शो। बने रहेगा हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन से। मैं अभी साइन ऑफ करता हूं।
कुछ प्रेशर में बिखर जाते हैं और कुछ प्रेशर में निखर जाते हैं। आज जो प्रेशर से निखर कर आए हैं उन्होंने दर्शाया एक शानदार इंडेलिबल गेम और परसिस्टेबल परफॉर्मेंस के साथ अफेक्शनेट विन। जी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेरियार पैंथर्स की और नीलगिरी नाइट्स के। आज दो बड़े मुकाबले थे यहाँ पर। समिट राउंड चल रहा है, चैलेंजर राउंड उतना बेहतर नहीं गया नीलगिरी नाइट्स का। उसके पश्चात 2 में से 2 लगातार जीत के साथ एक और बड़े एलिमिनेटर की तरफ ये पहुंच चुके। बट अभी मेरे साथ मौजूद है जिनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट। नवीन चौरी, स्वागत है आपका। Thank you so much, Arshit. Yeah, I really feel happy that when good sport is being played, you know, whether it's the Periyar Panthers or the Aravali Arrows or Nilgiri Knights doesn't matter to me at all, because what matters really to me is Yuva Kabaddi series as a platform, and you know, we have to divide them into teams, so that's why we go ahead and do that. But anybody playing well, I always I'm really happy with that, and I was very happy with the Periyar Panthers going ahead and you know, making sure that against a very strong side once again like Chambal Challengers, going out there and putting out 100 performance. I mean, that was fabulous. 100% performance, just mind-blowing. And I was really happy with the entire unit, how they worked around together. जी आज बैफलिंग कर देने वाला कार्य पेरियार पैंथर्स ने करके दिखलाया। परफेक्ट होमवर्क के साथ आया था, बट होमवर्क हमने भी किया। रूट टू फाइनल्स की ग्राफिक्स में आइए उसकी तरफ ले चलते हैं आप सभी को और देखते हैं कि कौन कौन सी टीम कहां तक पहुंच चुकी है। नवीन, I think this is the homework that has already been done by the players. We are correcting it maybe. Right, that's what it is looking like, as the Chambal Challengers tomorrow will be playing the Nilgiri Knights in the morning. Right, let us once again go out there and tell it to you. It's going to be a 10:30 a.m. match. Tomorrow, the Eliminator number 3 will be a 10:30 a.m. match, and in the night we will have the Eliminator number 4. We will see who will be playing the Periyar Panthers, whether it's the Chambal Challengers or whether it's going to be the Nilgiri Knights. The winner of that Eliminator number 3 will be playing against the Periyar Panthers. That is the semi-finals. Of course, Eliminator number 4 is what it's been named as. Tomorrow, 8 p.m. जी हाँ, तो वर्चुअल सेमीफाइनल वहां हमें नजर आने वाला है। पेरियार पैंथर्स देखते हैं वो इंतजार करेंगे 8 बजे तक का, बट उन्हें कैसे पता लगेगा कि किस तरह के प्रदर्शन को और करना है, क्योंकि वो एक बार फिर से एकत्र होंगे। पूरन शेखावत वहां उनकी टीम के साथ कार्य करेंगे। तो नवीन, आइए ना हम पूरन शेखावत साहब और पेरियार पैंथर्स की बात ही शुरू करते हैं, क्योंकि चंबल चैलेंजर्स के विरुद्ध उनका मुकाबला था और एक आज रणनीति नजर आई थी कि दुर्गेश को बोनस अंक दे दीजिए। उन्हें टच पॉइंट शुरुआत में दिए, गलती के पेरियार ने ऑल आउट हुए। उसके बाद क्या शानदार कमबैक किया और फाउटबैक किया और मैच को जीता। See, that is why I specifically asked Puran that what is your strategy? Are you changing your left corner and the right corner? Because Palani Tuskers did exactly the same thing. And Puran said, we have another strategy. We are not putting in little, heftier defender like Arul Nandababu or, Viswant for the Palani Tuskers, where the change was happening. Here, even with Lokesh Gosalia and even with Anuj Saini, they went out there, just gave him bonus points. Just did not give him touch points. That is a very good strategy. Good that, you know what, Puran showed the confidence in his boys in the defense. They actually stood up to it. जी हाँ, तो आइए उस मैच समरी की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि मैच समरी में एक बार फिर से आपको सिंगल डिजिट में अगर कुछ नजर आएगा तो वो होंगे चंबल चैलेंजर्स के लिए टैकल पॉइंट्स। नवीन, फिर से सिर्फ 6 टैकल पॉइंट्स, और उसमें से भी अंत में आते आते 1-2 टैकल पॉइंट्स कहीं ना कहीं पेरियार पैंथर्स के रेडर्स ने उन्हें गिव अवे किए थे। तो पेरियार पैंथर्स का डिफेंस उतना ही सशक्त नजर आया। सिंगल डिजिट में उनके भी टैकल पॉइंट्स हैं नवीन, पर बहुत कुछ निर्भर कर रहे हैं। Yeah, correct. The tackle points are fine, but look at that, Arshit. It's the 3 all-outs against the Chambal Challengers. Now, that's a big problem. And in the 29 raid points, if Durgesh Kumar is getting 23 again, see, that is once again being a problem. You can't have one-man army going against Periyar Panthers. And see, Chambal Challengers, don't you know now, Rajaram and his unit would have watched you. Don't you know that it's going to be Nilgiri Knights tomorrow? Don't you know that they're going to plan against Durgesh very clearly? See, that is why that all-out was so detrimental for the Chambal Challengers. And look at that impact that is got for the Periyar Panthers. 3 all-outs inflicted. And of course, that one of that 2 extra points also, where the error was going in from the Raiders and defenders stepping outside the end lines. So that is where they need to correlate themselves, and they don't have too much time, Arshit. They have only 10 hours max. Maximum 10 hours. They'll have to come back 10:30 tomorrow morning. They'll have to find a way out to get through the Nilgiri Knights. जी, आज बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैच वहाँ पर होने वाला है। बट नवीन, आज एक और बार रेडर ने जो अफेक्शनेट परफॉर्मेंस करके दिखलाया है। रोहित यादव बहुत युवा हैं और जो उनका बेखौफ अंदाज है, और बेखौफ अंदाज के साथ हर एक डिफेंडर को जो उनकी चेक करने की स्किल है नवीन, राइट फ्लैंक से भी और लेफ्ट फ्लैंक से भी। He is again very impressive. See, that is what I said, where Rohit Yadav and Richpal Jat being a very good balance of the left and the right raiders. And the problem there, see, once again, Rehan Sheikh was not fielded in that left corner. Javed Khan was being, given that position of the left corner. And once again, Javed Khan also doing the same errors. And Harshit, every time I always go ahead and say this.
see again, if we go back to that a double shot on a wider angle, where we are standing is this is the midline. This is the border for the Raiders, and that is where the border for the defenders is the balk line. Yeah. The defenders should not cross the balk line, as simple as that. Yeah. And today Javed Khan did not do it at all. That was again a problem. And stumble challengers, I am okay that today they again lost out, but I will not be okay if they have not learned their mistakes tomorrow morning. Yeah. That will be a bigger problem because tomorrow again Nilgiri Knights is not easy. क्योंकि आपने पहले 2 स्पॉट पर समाप्त किया, इसलिए आपको 2 मौके मिले हैं और युवा कबड्डी सीरीज का ये फॉर्मेट है ना कि आपको मौके मिलते हैं अगर आपने अच्छी तरह से कार्य किया है, बट कल कोई मौका नहीं होगा नवीन, कल वो जीत या हार की लड़ाई होने वाली है, डू और डाई की वहां पर लड़ाई होने वाली है। बट नवीन हम जल्दी से अगले मुकाबले की तरफ चले, इससे पहले आज जो हमें नजर आया नवीन कि चंबल चैलेंजर्स पेरियार से ज्यादा खुद की मेंटलिटी से आ रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआत से दुर्गेश जैसा आपने भी कहा था प्री शो में कि आज वो एनर्जी नहीं नजर आ रही थी। और हम एक बहुत बड़ा रिमार्केबल एग्जांपल की बात करते हैं आकाश शिंदे द मैन, जिन्होंने अपनी पूरी टीम को एक साथ होकर खुद भी रेड पॉइंट्स लाते थे और पूरी टीम को एक साथ होते हुए करते थे। Harshit, he is phenomenal. I mean, if you can see the real goosebumps, it's Undoubtedly, real. It's on the lights. Yeah. You take that man's name, I really get the goosebumps. And of course, along with him, of course, Aditya Shinde for the 10 Ahmednagar team of the Periyar Panthers. If you really need to talk about the Pune leg, see, those are the 2 players who actually go out there and lift up the team spirit. And see, yesterday also, what happened in the post show that we spoke about, Sundara Vishwakandan, who won the Best Raider award. What did he say? He said Mari Muthu's morale was down. I boosted it up, saying, okay, come on guys, we have already won against the Chola Virins. We know how to win it. Come on, let's go for it. Harshit, as always, Captain Cool, MS Dhoni's famous dialogue. हम मैच कहाँ पे हारे थे? ग्राउंड पे नहीं, बाहर। बाहर। तो वही कल हम यही आशा करेंगे चंबल चैलेंजर्स दुर्गेश बहुत अच्छी तरह से कार्य करें और अच्छी तरह से अपनी टीम को पॉजिटिवली लेकर आए। बट नवीन आज पॉजिटिवली कौन आ रहा था? नीलगिरी नाइट्स वहां पर बहुत ही पॉजिटिव अटायर के साथ वहां पर आ रहा था और उन्हें शुरुआत से जो अंदाज दिखाया नवीन वो सच में लाजवाब था। शुरुआत में वो आपको कहीं ना कहीं एग्रेशन भी था, थोड़ा सा मजा भी था। आइए समरी की तरफ ले चलते हैं। Harshit, what I saw before even we go ahead and dissect this game in the Chamundi Vihar Indoor Stadium today being a weekday, by the way, the stadium and the stands were almost full and the sound was coming in for the Nilgiri Knights. I'll tell you for what. It's not that they're backing that team across. Of course, they're enjoying Kabaddi. The more important reason was they were supporting the team which was playing in the Kabaddi spirits. They are completely supporting that team playing in the Kabaddi spirits, and that first 10 minutes was okay, where the first quarter of the first half, if you need to put that 10 minutes out, it was almost even Stevens. That first all out against the Aravali Arrows, and then small comeback by them, but then they could not come back totally. Just a half comeback, they should have gone in, and I think more advanced tackles, that's all. See, 20 raid points, that actually suggests, taking off Hariom Chaudhary off, and then Chetan Chaudhary putting out there, and of course, Ankit Jat's injury. Yeah, when he went out to raid to save the team on an all-out. I mean, that's strategically completely wrong for me. And you lost out a defender when he was raiding? That's not right. जी हाँ, वहाँ पर उन्होंने गवाया अपने आप को। बट टैकल पॉइंट्स आज फिर से नीलगिरी नाइट्स के लिए अच्छे थे, वहाँ पर आपको अच्छे नंबर्स नजर आए। ऑल आउट पॉइंट्स ने बहुत मदद की, रावली को 2 बार ऑल आउट किया यहाँ पर नीलगिरी नाइट्स ने। और सुपर रेट जो थी ना नवीन, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो के हरीश की वहाँ पर नजर आई। और आज वही हमारा कबड्डी कमाल मूवमेंट भी है। के हरीश कल हमने बात की थी नवीन, जब हम दोनों कॉमेंट्री बॉक्स में थे कि के हरीश कब शुरुआती साथ में आएंगे, और राजाराम साहब ने ये शायद सही समय समझा, अरावली के डिफेंस के विरुद्ध उन्हें उतारा और आते ही उन्होंने एक परसेप्टेबल परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए दिया है। Yeah, totally. See, even before this match, we got a question as well from one of our Yuva Kabaddi followers saying, has K. Harish lost form after he was been injured? I said yes, he has lost form. He's underplayed himself. Today, he has to overplay only himself. He's got a point to prove only for himself because he's a very good raider. And today, he did it. He did a fabulous job. And for me, Harshit, yes, the team has gone ahead and picked this as a Kabaddi Kamal moment, which is completely accepted by both the hands. But for me, if you really look at Manigandan Sudalamani, the last man standing, he going and raiding and having a back kick. Oh my God, a defender with the back kick was just phenomenal. He took out the left cover. He did not take the right cover out. He took out the left cover with the back kick. That was magnificent. And there, the all-out was being saved for the Nilgiri Knights. And for me,
that was a match-saving moment as well. Yeah, see, all these moments, see, when you have 2-3 moments of match-saving instances in a match, that shows the team coordination. जी हाँ, टॉप रेंज परफॉर्मेंस वहाँ पर नजर आया, बट टॉप रेंज परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो जो आज डिफेंस में फाइनेस्ट रहे थे कहीं ना कहीं वो 12 नंबर जर्सी रहा था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर और 12 नंबर जर्सी नवीन ने इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा कमाल रहा था। युवराज सिंह का वो नाम, जब हम बड़ी बड़ी चैंपियनशिप की बात करते हैं तो क्या ये 12 नंबर जर्सी नीलगिरी नाइट्स को चैंपियनशिप तक पहुंचा सकता है? अभी बहुत बड़ा रोल है उनका, बट अभी समय दोनों को बुला लें। Yeah, totally. Let's call them then. Let's call Rajaram and Velavan in. First, I will actually give it out to Rajaram as well. Rajaram அவர்களை இன்னைக்கு வந்து அருமையா விளையாடுனீங்க, முழு அணி பெருமையா வந்து வெளியில காட்டுச்சு. என்ன சரியா செய்றீங்க அப்படின்ட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா முழு சேலஞ்சர் ரவுண்ட் வந்து ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கிறதுக்காக நீங்க ரொம்ப தவிச்சிங்க. அந்த வெற்றி வந்து உங்களை வந்து தேடி வரவே இல்லை. இங்க சமிட் ரவுண்ட்ல 2 அணியை வந்து வீட்டுக்கு அமைச்சிருக்கீங்க. நாங்க தான் நீலகிரி நைட்டு அப்படின்ட்டு 2 நைட்டு வெற்றி உங்களுக்கு. எப்படி என்ன சரி ஆகுது அப்படின்னு தோணுது உங்களுக்கு? இல்லை சார், நாங்கள் எங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக நாங்கள் அதாவது சேலஞ்சர் ரவுண்டில் கடைசியாக வந்ததுனால 5th பிளேஸில் வந்ததுனால நாங்கள் ஆடப்போகிற எவ்ரி ரவுண்டுமே நாக் அவுட் ரவுண்ட் மீன் எலிமினேட்டர் ரவுண்ட். ஸோ இது வரைக்கும் லீக்கில் ஆடின மாதிரி ஃபீல் பண்ணி ஆடக்கூடாது. நான் பிளேயர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணது, நீங்கள் அதே பிளேயர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ரவுண்டில் விளையாண்ட அதே பிளேயர்ஸ் தான் இங்கே விளையாட போகிறீங்க. ஸோ அப்போது உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது, அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை உங்களால் கொண்டு வர முடியும், நம்ம ஜெயிச்சு காட்டலாம் அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணேன். தவறுகளை சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் தான், அதை சொன்னேன், அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இன்றைக்கி எஸ்பெஷலி வேலவனோட கேம் பார்த்துருப்பீங்க, நிச்சயமாக அவர் தவறுகளை திருத்திக்கிட்டார். ஏன்னா கொஞ்சம் இன்றைக்கி அக்ரெசிவாக விளையாடுறாரு, அதை மட்டும் அக்ரெசிவாக குறைச்சிக்க சொல்லி கன்வே பண்ணியிருக்கேன் சார். ரொம்ப தங்கமான விஷயத்தை சொல்லியிருக்கீங்க. ஏன்னா எதிராளி அணி அப்படி உங்களை தூண்டி விட்டா நீங்கள் வந்து அந்த தூண்டல்ல வந்து நீங்கள் போய் மாட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. அது நீங்கள் அருமையாக சொல்லியிருக்கீங்க. டிஃபென்ஸில் என்ன சரியா ஆகுது அப்படின்ட்டு எதுனா உங்களுக்கு தோணுதா? நிச்சயமாக சார். அதாவது எங்களுக்கு முதல்ல சென்டர்மேனை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு விளையாண்டதுனால இன்றைக்கி அட்வான்டேஜாக இருந்துச்சு. அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரைடருக்கு ரெஸ்ட்டும் ஆச்சு, ஆனால் எங்களுக்கு டிஃபென்ஸும் சக்ஸஸும் ஆச்சு. ஏன்னா 2மே டிஃபெண்டர் இல்லையா, அதனால் ஒரு ரைடருக்கு கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஃப்ரீயாக விட்டுறாங்க. இவங்க 2 இன்னைக்கு அது பிளான் சரியாக வந்துச்சு சார். கண்டிப்பாக நல்லா விளையாண்டாங்க. Super. So what he's trying to say is, Arshit, that the cover defense, when they are standing out there in the chain, we've been discussing so much there out there, so they are trying to implicate that one. And that is why the defense is going and doing well. அருமை. ஆனா நாளைக்கு வந்து 2 போட்டி உங்களுக்கு இருக்கு. காலையில 10:30 மணிக்கு ஒரு போட்டி, அப்புறம் இரவு 8 மணிக்கு ஜெயிச்சா காலையில 8 மணிக்கு ஒரு போட்டி இருக்கு. அந்த 2 போட்டி, ஏன்னா நீங்க வந்து முழு சீரீஸ்ல 2 போட்டி விளையாடுனது இல்லை இன்னும் இது வரைக்கும். ஸோ எப்படி அந்த ஒரு தயாரிப்பு மனநிலை எப்படி இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க பசங்களுக்கு? இல்லை சார், இது நாங்கள் வேற எந்த டீமாக இருந்தாலும் இது விளையாண்டு தானே ஆகணும். அப்போ கண்டிப்பாக நாங்கள் மென்டலி ப்ரிஃபர் ஆகிட்டோம். அதுக்கு நமக்கு மார்னிங் இப்போ பிளானே பூரா நெக்ஸ்ட்டு போயிட்டு இப்போ ரூமில் மீட்டிங் போய் மார்னிங் மேட்ச்சை ஃபஸ்ட் மேட்ச்சை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு அதை வின் பண்ண பின்னாடி தான் அடுத்த மேட்ச்சுக்கு கொண்டு போவோம். இப்போவே 2ஐயும் போட்டு குழப்பிக்க மாட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் மேட்ச்சை வின் பண்ணுறது எப்படின்னு பிளான் பண்ணுவோம். பசங்க பிளேயர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுவோம் சார். So he's taking one match at a time. He's not thinking about the 8 PM match as of now. He's just thinking about the morning match as well. கடைசி கேள்வி ராஜா உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம பிளேயர்ஸ் அப்படின்ட்டு நீங்க பார்த்தாலே வந்து ரொம்ப வலிமையானவங்க, ரொம்ப வந்து அங்கே துணிஞ்சு எதுக்கும் இறங்கி செய்யக்கூடிய ஒரு பிளேயர்ஸ். ஆனாலும் எங்கேயோ நம்ம வந்து இந்த கேசவன் ராஜா ஆகட்டும் இல்லை வசந்த் ஆகட்டும் கொஞ்சம் காய்ச்சல் வந்திருக்கு. இந்த காய்ச்சல்ல இருந்து இப்போ வெளியில வராங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு? கேசவன் ராஜாக்கு என்ன அங்கே உடம்புல பிரச்சனை இருக்கு, அப்போ அங்கே நம்ம வசந்துக்கு என்ன இருக்கு? ரெண்டுக்குமே ஃபீவர் தான் சார், ஃபீவர் கோல்டு தான். மற்றபடி இப்போ செக் பண்ணிட்டோம், ஹாஸ்பிட்டல் போய் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க, டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இப்போ இன்றைக்கி வசந்த் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இருந்தாலும் மெயின் 12 இருந்து தான் இருந்தார். அவர் வெளியில் 12 இருந்து கூட எடுத்துடலான் இருந்தோம். வேறு ஏன்னா ரைட்டுக்கு அஃபென்ஸுக்குன்ற போது அவர் தான் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு. அதனால் அவர் என்னால் சார் கண்டிப்பாக லெஸ் பிளேயர்ஸ் இருக்கும்போது ஏதாவது இவங்களுக்கு யாரும் ஸ்கோர் ஆகலைன்னா நான் பண்ணுறேன் சார், என்னால் முடியும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால தான் அவரை வார்ம் அப் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்தோம் சார். Arshit, even with a little bit of a fever that's running in for Vasant, we saw him in the bench with wearing jacket and sitting in. The reason why he came was, if the team needs, if Raiders fail, I will remove my jacket out, I will go out there on the mat and I will raid, is what he's been told the coach, and that's why Vasant has come today with the team. அருமை, வாழ்த்துக்கள், நாளைக்கு நல்லா விளையாடுங்க. வாங்க ஐயா, ஐயா அவர்களே. அந்த பல்ல காட்டுங்க, க்ளோஸ்அப்ல பல்ல காட்டுங்களேன், காட்டு. நான் ராஜாராம் ஐயாட்டையும் அதே சொன்னேன், நான் உன்ட்டையும் சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப தடவை. என்னன்னா, இன்னைக்கு நீங்க நல்லா விளையாடலன்னா உங்களை பல்லவன் கூடுவேன், அருமையா விளையாடினா வல்லவன் கூடுவேன். ஆனா என் வாயால இன்னைக்கு வந்து ஒரு தடவையும் நான் பல்லவன் நான் கூடவே இல்லை.
வேலவன் தான் கூப்பிட்டேன். அருமையான விளையாட்டு. ஆனா மறுபடியும் அதே கேள்வி, எதிராளி அணி தூண்டி விடுறாங்க, ஏதாச்சும் கொஞ்சம் உங்களை வந்து வெறுப்பேத்துறாங்க அப்படின்னா நீங்க பதில் எப்படி கொடுக்கணும்? செயலில் தான் சார் காட்டணும். நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கோவமாக இருந்தேன். அதை அஃபீஷியல்ட்டையும் சரி பிளேயர்ஸையும் சரி சாரி கேட்டேன். அடுத்த மேட்ச்சில் மாற்றிக்குவேன். அது இனி வரக்கூடிய மேட்ச்லாம் அந்தமாரி கோவமாகவும் இருக்க மாட்டேன். நான் தான் இத்தனை மேட்சாக சொதப்புனேன். விளையாடணும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு மோட்டிவேட்டாக ஒரு வெறியாக இருந்துச்சு எனக்குள்ள. இனிமேல் அதுமாரி பண்ண மாட்டேன் சார். அருமை ஹர்ஷித். He's gone ahead and accepted that until now, if the left corner is a problem, I was the one who was actually creating the problem. I am sorry I did not perform well. And for the aggression that was coming in from the opposition side, I also got little aggressive. And I really want to apologize to all the coaches and Yuva Kabaddi series. That's what he's saying. Wow. Super. Aruma. And I'll tell you what, Arshit, before I ask him that question, I'll tell you something. Me and Ryan, and I also got this as an inside information. Aya, unga anumadiyoda idha na pagandukren aya. I've asked his permission to say this. He's got a rule internally inside the team that it's a very disciplined rule. If somebody is not disciplined, like say if they come late for the training, if they are not wearing ID card, if they are loitering around inside the hotel, alone everywhere, breaking the rule of contact, you know what Rajaram has done? He's asked if somebody is being found like that, he has punished them saying, listen, you need to buy treat for all the team. From your own money, you need to buy treat. And I'll tell you what treat. Half-liter milk packet to everybody. Wow. And kacha doodh, they'll not even boil it. It's a nutritious treat. It's a very nutritious treat. Right, so you know all that milk packet, everybody will get each milk packet from the person who has actually committed the error. But if they don't commit the error and if they behave very well, Rajaram will treat them. That is what it is. Rajaram is treating them. And I'll tell you one more thing. Yesterday Sundara Vishwakandan, today when I came out of my room, I saw